Hello everyone, welcome back to Learn with Endless. Today I'm going to start with a new course that is the Individual and Society. It is a G course of Delhi University. So without any wasting time, let's get started. Anyway, if you guys want notes related to the topics that I'm sharing in the video or such, you can join the Telegram for the notes. Notes are absolutely free. You just have to subscribe to my channel for notes. Anyway, thanks for your support. Without wasting any time, let's get started. So here's the unit one. Unit one, caste and class. It consists of a total of six chapters or six different stories. Let's discuss them one by one. So the first one is Caste Laws by Jotirao Phule. I've made notes and integration, and I've made integrated notes, but I will share you notes separately, unit wise and also chapter wise. They are just brief notes, concise notes for your exams as they are just around the corner, probably in 20 days. So, all the best, everyone. Let's get started. Caste Laws by Jotirao Phule. The essay Caste Laws is an excerpt from the preface to Jotirao Phule's seminal work Slavery, Gulamgiri, published in 1873. The text provides a radical critique of the caste system, which Phule categorizes as a form of slavery perpetuated by Brahmins. Below are the detailed notes on the topic caste laws for your university level preparation. Conceptual framework and comparisons. First, caste as a slavery. Pule explicitly compares the condition of the lower caste, Shudras and anti-Shudras, in India to the system of Negro slavery in the United States. Second, target audience and emancipation. He dedicated his work to the people of the US who fought against slavery, hoping his countrymen would follow their example. He believed emancipation could only come from social movement led by the people themselves rather than through government intervention alone. Third, the role of education. Pule argues that historically education was used as a tool for suppression. Brahmins denied education to women, and lower caste men to maintain a monopoly of language and keep the masses at their mercy. Next topic, historical reinterpretation. It is a part one of the essay. The part one of the essay, Pule challenges the traditional Brahminical view of history by presenting an alternative narrative from the lower caste perspective. Aryan invasion theory. Posits that Brahmins are descendants of Aryan invaders who displaced and subjugated the original inhabitants of India after a long struggle. Nature of the invaders. He characterizes the Aryans as arrogant and manipulative traits he argues are present in their descendants. Decoding ancient terms. Terms like Chandala, Shudra, and Maha are viewed by Phule as labels of hatred used by Aryans for the original inhabitants who resisted them. Reclaiming myths, he reinterpreted Brahminical legends, example the war between Devas and Daityas, as historical accounts of conflicts where the evil portrayals of Rakshas were simply reflections of Aryan hatred. He views the term Rakshasa as denoting protection of the land. Third, consolidation of Brahminical power, part two of the essay written by him. The section analyzes how Brahminical dominance was institutionalized. Constitution of caste. Pule argues that the caste system was deliberate construction to endow Brahmins with unimaginable powers and privileges. Mental slavery. Through the control of scriptures and denial of education, Brahmin convinced other castes of their own inferiority. This mental suggestion is a central theme, illustrating why many victims of the system became its unfitting supporters. Hey guys, pause the video for a second. I would just want to say the notes will have a password, and for the password you have to watch the whole video. ठीक है? जिस वीडियो का भी तुम्हें पासवर्ड चाहिए बेसिकली जो उनसे भी नोट्स का तुम्हें पासवर्ड चाहिए वो इसी वीडियो में होगा तो तुम्हें वीडियो देखनी ही पड़ेगी थोड़ी तो देखना यार हर वीडियो के बीच में एक
स्क्रीन पे शो कर जाएगा या मैं खुद ही बोल दूंगा और दैट विल बी द पासवर्ड. ठीक है. Anyway, let's continue on the study. Uh, Fourth topic, failure of governance and solutions. Part 3 of this. Pule critique the continued domination of Brahmins even under British administration. He argued that the British administration, despite claiming to be civilized, continued to rely on the learning few, mostly Brahmins, to help exploit the majority. The path forward. Phule suggested that national progress is only possible by cutting down the Brahminical domination to size. He emphasizes the need for the Shudras to educate themselves about the truth of the caste system to eventually thrown in. Summary of Pule's approach. Perspective. He shifts the focus from seeking mobility within the caste system to the total rejection of the system itself. Tone. The essay is prescribed as polemical, emotional, and sharp, designed to arouse the consciousness of the oppressed. Legacy. Pule work served as an intellectual foundation for later readers like Dr. B.M. Rao Ambedkar, who called him the greatest Shudra of modern India. Here are just some important topics. You might get a question answered in the form of this topic, so I have highlighted them. Let's go through them again. Uh, Question can be asked like the define the introduction of Jotirao Phule according to 16th century social as a social reformer. So you have to write in such key points. Historical significance and writes its significance as over. Uh, Historical significance. Phule is regarded as a major social reformer of 19th century Maharashtra who challenged upper caste domination. Controversy and criticism. During his life, he was often accused of creating hatred between Brahmins and non-Brahmins. Critics frequently attacked his lack of formal command over grammar and philosophy to dismiss his radical arguments. Core agenda. His work marked the beginning of a challenge to social hierarchy and aimed to provide an alternative point of view from the perspective of lower caste. Caste laws as a form of slavery. Question can also arise from this. Okay, what do you understand with this statement? Do you agree with it or not? So anyway, you have to write such points. Source material. The essay Caste Laws is an extract from the preface of Phule's most influential book, Slavery, Ghulamgiri, published in 1874. Central concept. Phule explicitly equates the caste system and its laws within the institution of slavery. Subtitle significant. The book's subtitle, In the Civilized British Government Under the Cloak of Brahmanism, highlights Phule's view that Brahminical dominance continued to flourish even under British rule, despite their claims of civilized government. International connection. Pule dedicated slavery to the people of the United States for their devotion to the cause of Negro slavery. He hoped Indians would use the American example as a guide for the emancipation of the Shudra Brahmin from Brahman thraldom. And another important, the analysis of introduction quotations. Pule used three foreign quotations to establish the outsider's objective view of Brahmanism. First, Homer emphasizes that, and it emphasizes that slavery is the worst possible state because it robs a man of his essential virtue and dignity. Second, educational exclusion focuses on how the education in India was used to overeducate a few Brahmins so they could exploit the majority, lower caste and women, example, Shudra वगैरह, who were denied learning, STs, STs वगैरह, तभी इतने सारे laws अब आए हैं to protect them. Third, Brahm, Brahminical contradiction. Critics discuss how the Brahmins boast of vast knowledge while stimulously perpetuating degrading superstition practices to maintain their power. You know that Brahmins used to flaunt their knowledge as such. They are knowledgeable, they were knowledgeable, but as such, there was a class system. Thankfully, nowadays, younger generation don't do such stuff. They're cool. There is equality. More like they are not caste wars now. They are gender wars now. Anyway, let's focus on the topic.
टॉपिक से बाहर जा रहा हूँ. Another important question. It could be asked, right? Explain the Aryan invasion theory through the historical context, and you have to write that. Pule offers a radical interpretation of Indian history origins. He argues that Brahmins are the descendants of the Aryan invaders who displaced and subjugated the original inhabitants of India after long battles. Labeling as oppression, terms like Chandala, Shudra, and Mahar were labels created by Aryans for the aborigines who resisted their invasion. Mythological subversion. He often views Brahmin myths as biased chronicles where original inhabitants were and were portrayed as dimwit or cruel, or the Rakshasa. While portrayed as demons in Brahmin texts, Pule argues the originality meant protector of the land. Personally, I don't agree with this one. Rakshasa are Rakshas, Devas are Devas. Anyway, history is written by winners, so we can't argue. Another next topic, the mechanism of caste dominance. So if you get any question regarding this, you can write it in such points, mental slavery. Pula argues that Brahmins use cunning to make other castes believe they were naturally inferior. Divine justification. Brahminical myths claim Shudras were created from Lord Vishnu's feet, especially to serve Brahmins who were said to come from mouth. Denial of education. By preventing lower castes from studying scriptures, Brahmins ensured they would only believe what they were told, effectively keeping them oppressed through a combination of myth making and ignorance. And for the last important topic for the story, comparison with the other works. You can they can give you a question, right? Okay, compare this work, Caste Laws, with other works like which will be I will be sharing soon with another works from another famous authors like Premchand, Sadhgi, or Dalit Conscious from Dalit Chetna. So you can write this in contrast to that. कि Premchand's deliberate sadhgi. While Pule uses rational arguments and history, Premchand uses imagination and irony to show the lived reality of these laws. In the story, the character Dukhi in the Sadhgi is an example of the enslaved mind. Pule describes he is a willing partner in his operation because he believes that Brahman is a holy man. And Dalit Chetna for Dalit consciousness, Pule's goal was to shift attention from mobility within the system to the total rejection of the caste system itself. This laid the groundwork for the future movements, such as led by Dr. B. Ambedkar. Anyway, all the best for your exams. If you like this video, share it with your friends. This is my YouTube handle. If you want, please subscribe to my channel. Support करो. Hopefully मेरे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़े, मोनेटाइज होगा चैनल. ठीक है. Anyway, thanks for watching. Bye. See you guys soon. और मैं इसके आगे की वीडियोस भी डाल दूंगा. इस सब्जेक्ट में लिटरली बहुत सारे हैं. इस कोर्स में है काफी सारी स्टोरीज. आई विल पोस्ट देम. आई विल ट्राई टू पोस्ट one day a video. Anyway, thanks for watching. बाकी do subscribe और वीडियो के अंदर पासवर्ड है and the password is Sir Hardik 00 for this these notes which you have guys have studied today, all in caps. Sir Hardik SIRHARDIK 00. Okay, thanks for watching. Bye. वीडियो बहुत लंबी हो गई कोई नहीं. Bye. Hello everyone. Welcome back to Learn with Dennis. Today I'm going to start the next topic of the course, the individual and society. Earlier we discussed the Unit 1 first chapter, that was Caste Laws by Jotirao Phule. Today we need to start with a new chapter that is written by Prem Chandra, Deliverance Sadhki by Prem Chandra. So if you're new to my channel, to subscribe to my channel for the notes and stuff. You can join the Telegram. Notes will be available on the Telegram. And notes are free of course. You just have to subscribe to my channel. And if you like my videos, do share with your friends.
So without any wasting time, let's get started. So delivering Sadgi by Premchand. Introduction to the text and author. Literary context. Deliverance, translated from the Hindi word Sadgi, is a short story that explores the brutal reality of caste laws and exploitation within an agrarian community. Meaning of the title. The Hindi title Sadgi, ironically translates to salvation in death or a worthy death, which contrasts sharply with the tragic and dehumanizing way the protagonist actually dies. Premchand's philosophy. Premchand believed literature should be an agent of social change. His writing was deeply shaped by his own experiences with poverty, death, and witnessing the exploitation of the poor under the British colonialism and zamindari system. Comparison with Phule. While Jotirao Phule, Caste Laws is an analytical essay focusing on history and theory, Premchand's theory is literally and imaginary, presenting a piece of life to stir the reader's emotion regarding the same social events. Theme and social critics. Uh, the themes and main social critics of this story are mental slavery, caste hypocrisy, the concept of pollution, institutional exploitation. Let's discuss them one by one. Mental slavery. A central theme is mental subjugation, where the oppressed internalize their own inferiority. The protagonist Tukhi feels the Pandit as godly despite being treated inhumanly. Caste supremacy. The story exposes the irony of the Brahman's holiness, which is portrayed as a lucrative business of rituals and meaningless self-decoration used to attract clients. The concept of pollution. The narrative highlights the extreme measures taken to maintain purity, such as Brahman's wife anger over a tanner being near her home, contrasting with the way used to exploit the same person's labor. Institutional exploitation. The Brahmin, Pandit Ghasirao, seizes the opportunity to extract free labor from the king by promising to perform a religious service, fixing a wedding day. Next, next subtopic is character analysis. Dukhi Datana. He represents the Saval mind. Despite being hungry and exhausted, he refuses to blame the Pandit for his suffering, except his abuse as his due, because he believes the Brahmin is inherently holy and clean. Basically, caste supremacy. Next character, Pandit Ghasirao, portrayed by narrator as a roly-poly fellow with ridiculous rituals, making him look like a buffoon than a holy man. Mainly, the narrator was making a foolery. And he is shown to be hard-hearted and greedy, lacking even the basic human decency to offer a tired worker refresh. Next character, Chikuri the Goon. As an outsider, not part of the rigid Hindu caste fold, he provides a submersive perspective. He is not mentally enslaved and tries to convince Suki to quit the unpaid work, even noting that the colonial government at least pays for forced labor. Next subtopic, the climax and ending, a dog's tale. The fatal label. Driven by the mix of awe, respect, and fear, Duki pushes his exhausted body to split a piece of wood as hard as steel until he dies of delirium and physical failure. The crisis of the corpse. Following his death, the Brahmin village is thrown into the state of irritation because the polluted body is on their property. Submersion by the Tanas. Influenced by Chikuri, the Tanas refuse to touch the body to avoid police trouble, leading to a stalemate where Brahman himself is forced to dispose of it. The final irony. The story ends with Pandit Ghasiram trying to noose around the dead man's feet and dragging him to the fields to be devoured by scavengers. The narrator's closing comment. This was the reward of the whole life of devotion. Underscores the profound irony and inhuman of the system. Summary for the exam preparation. Narrative technique. Premchand uses irony, satire, and contrast to critique the caste system.
Key insight. The story illustrates that while the physical labor is a burden, the true deliverance required is from mental slavery that keeps the oppressed from rebelling. The story mainly focuses on literary analysis and social critique and thematic depth. And now I'm going to important topics. In these topics, will questions will come around these topics only. In question paper, you can be asked introduce to write the introduction of the Premchand and his literacy philosophy. So you have to write like this in key points. The writer's role. Premchand, 1880 1936, is often referred to as the Upanyas Samrat, Emperor of Novels. He believed that the literature should not be merely entertainment, but serve as a critic of life as an instrument for social reform. Idealism over, sorry, realism over idealism. Again, रात को recording करनी चाहिए. Moving away from the traditional romanticized stories of his time, Premchand introduced social realism. He depicted that the harsh realities of the Indian peasantry and the marginalized under the twin burdens of the colonial rule and indigenous social hierarchies, caste and feudalism. Its main connection to topic one, while Jotirao Phule provides a historical and sociological analysis of caste laws, Premchand provides a human document that illustrates how these laws manifest in day-to-day human suffering. The next important question that can be asked in in your exam is write the title analysis, the irony of deliverance, sadhgi. Literal meaning, sadhgi literally translates to good death or salvation, a ritualistic end that ensures a soul's passage to heaven, heavenly haven, heavenly, sorry, heaven, the irony. The title is deeply satirical. In the story, protagonist Duki die not in the state of spiritual peace, but from physical exhaustion and starvation while performing forced labor for the Brahmin. His deliverance is not a religious achievement, but brutal exit from life to systematic torture. The ultimate desecration. Even in death, Duki is denied the good death rituals. His body is treated as pollution and eventually dragged away by a noose by the Pandit, further highlighting the hypocrisy of the term. Next important question that can be asked is what are the internalized oppression of write about the internalized oppression of the Duki? First one, mental slavery. A central theme is the enslaved mind. Duki Atana, also called Samad. This time as we discontinued for you, you have to write Tana, has been socialized to be believe in the inherent divinity of the Brahmins. The willing victim. Duki does not rebel against the Pandit demands. Instead, he views the opportunity to serve the Pandit as a way to gain spiritual merit of his daughter's betrothal. He accepts his hunger and fatigue as a natural part of his station in life. Psychological awe. Premchand described Duki awe of the Pandit's godly appearance, the tilik, the sacred trim, and the serene face, which blinds him to the Pandit's lack of basic human compassion. Next important question will be write about the character of Pandit Jasiram and also write your views on ritual versus morality. In this, you can write like this ritualistic purity. Jasiram is the embodiment of Brahminical thraldom. He's he is obsessed with external purity, avoiding the touch of an untouchable, but is internally corrupt and devoid of dharma, righteousness, economic exploitation. He uses religious authority to extract free labor from the beggar. He sees Dukhi not as a human being in need of help, but as a free resource to be used until broken. The Pandit's wife, she represents the domestic enforcement of caste boundaries. Her refusal to give Dukhi a coal to light his pipe or scrap of food highlights the total absence of empathy within the upper caste household. Next important question would be
Write about the climatic death and crisis of pollution. In this, you can write like this: the symbolism of wood, the hard, knotty log of wood that the is forced to split symbolizes the rigid, unbreakable nature of the caste system. Duki's attempt to break the wood mirrors the lower caste struggle to survive within a system that is physically and mentally crushing. The stalemate, the stalemate. While Dukhi dies on the Pandit's doorstep, the primary concern of the village is not the loss of life, but the pollution caused by the dead tanner, the Gon's subversion. Chikuri, the Gon, plays a crucial role by warning the tanners that if they touch the body, they will face legal trouble. This prevents the Brahmins from easily disposing of the impurity, forcing the Brahmin Pandit to confront the physical reality of the death he caused. Next important question. Write about the key thematic pillars of the uh, that you think. These are the main three: caste and labor. The story illustrates how the caste system provides a legal and religious framework for the economic exploitation of the poor. The hypocrisy of the orthodoxy. The preemption exposes those who claim to be the righteous guardians of the law. Oh, sorry. छोड़ यार मैं नहीं बनाऊंगा ज़्यादा बन जाएगा ज़्यादा एक्स्ट्रा और नोट्स में ऐड कर रहा हूँ फिर एडिट करने पड़ेंगे मुझे नहीं यही ठीक है ये बेसिक है इतने बहुत है बाकी खुद भी बना के लिख सकते हो यार तुम लोग इतनी तो आती है इंग्लिश यूनिवर्सिटी में ये रिवीजन के लिए बाकी शॉर्ट के लिए जिसको जरूरत है The painter exposes how those claimed to be guardians of the God laws are the most frequent violators of basic humanity. Social conscience. The narrator aims to evoke shame and outrage in the reader, challenging the university student to look beyond the cloak of Brahmanism, as Phule put it, to see the underlying humanity. Summary for the revision. Features and their analysis. Protagonist Dukhi the sufferer represents the marginalized. Antagonist Pandit Ghasira represents the oppressive social order. Central irony: the holy man causes the death, and the salvation is the desecration. Literacy technique: irony, satire, social reason. Outcome: total dehumanization of victim, even in afterlife. Anyway, all the best for your exams. This is my YouTube channel. You must be watching on my YouTube channel. I'm stupid. थक गया सब चीज़. बाकी anyway, thanks for watching. बाकी subscribe to my channel. The notes will be available in the Telegram. और इस वाली वीडियो इस इन वाले नोट्स का पासवर्ड है लास्ट वाले का था सर हार्दिक 00 ऑल कैप्स इस वाले का है सर हार्दिक 01 ओके एंड क्या बोले ठीक है हाँ सब कैप्स में SIRHARDIK 01 सब ऑल कैप्स ठीक ओके स्टे ट्यून फॉर द मोर वीडियोस अगली वीडियो फिर पोस्ट करूंगा बना के ठीक है एनीवे थैंक्स सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो यार जल्दी से जल्दी हो मोनेटाइज हो चैनल मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी ठीक है ओके बाकी अगर कोई मेरे नोट्स पे थे तुम्हें पैसों के तो नहीं है मेरे नोट्स फ्री हैं ठीक है बाकी किसी को अगर लगे कुछ चाहिए तो मेरी मेल भी है ठीक है यूट्यूब में अवेलेबल है बिजनेस विद एंडलेस करके ठीक है तो मेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हो ओके ओके ठीक है सी यू गाइस सून बाय हेलो एवरीवन welcome back to learn with endless today we are going to start the third chapter of the course individual and society, the individual and society. We have discussed the unit one. We have so far discussed unit one first two chapters, and those were the Caste Laws by Jotirao Phule and Sadgi by Prem Chand. So, and these are the notes. You can check out those videos. They will be available now. They are available on my channel. And for the notes and you can join the Telegram. Notes are completely free.
You just have to subscribe to my channel. Yes, that's the price. नोट्स फ्री है लेकिन बस मुझे सब्सक्राइब चाहिए. हाँ, बाकी अगर कुछ भी दिक्कत हो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन मी. बस नोट्स के ऊपर पासवर्ड है एज ऑलवेज. और पूरी वीडियो देखोगे तो यू विल गेट टू नो अबाउट द पासवर्ड. और वीडियो के सेपरेट नोट्स डलेंगे. और पासवर्ड वीडियो के अंदर ही छुपा हुआ है. कभी मैं ऐसे ब्लर कर दूंगा बोल दूंगा. हाँ, ये स्क्रीन पे भी हो सकता है. थोड़ा सी गेम छोटी सी आप लोगों के लिए मेरे सब्सक्राइबर्स. ठीक है, ये दो हो चुके हैं. ये यार एक तो स्क्रॉल करने में थक जाता है. ठीक है, तो नोट्स की हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, इतना हो तक. ठीक है, ये रहा चैप्टर 3. ठीक है, लेट्स विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. This is the chapter 3 of the unit from Caste Laws. This is this. Okay, chapter 3 is from Juten by Om Prakash Valmiki. Let's get started. Uh, First of all, these notes are the precise concept notes. These are only made for those people I would suggest are doing the revision और जिसको लिटरली अभी कल ही एग्जाम है तो पढ़ना है. ठीक है, ये सिर्फ उनके ये सिर्फ आपके पास कराने के लिए है. मतलब अगर ढंग से करोगे तो आ जाएगी. कितनी जीपीए 7.5 तक तो आ ही जाएगी. ठीक है, 7 या 8 तक जीपीए आ जाएगी. ठीक है. ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द इंट्रोडक्शन टू ओम प्रकाश जो एग्जाम में आ सकता है. इंट्रोडक्शन टू ओम प्रकाश एंड न्यूटन. द जर्न एंड कंटेक्स्ट. ऐसी सी पॉइंट्स में लिखना. पॉइंट्स मिलेंगे तो थोड़ा सा उसके अंदर कंटेक्स्ट खींच सकते हो अगर पेज बनने होते तो. Journal and context. Newton. Newton is an autobiographical account of Valmiki's childhood and the youth as an untouchable in village in Uttar Pradesh during 1950. The significance of the title. The Newton literally means leftovers from a memory. It also carries the connotation of being polluted or unfit for human consumption. Metaphorical meaning. The title reflects how the Dalit community, especially the Bhangi or Chura caste, has been treated like joking, used and then discarded by the upper caste, and forced to subsist on actual leftovers for centuries. The author's mission. Valmiki is a vital figure in Dalit movement. He believes the change can not only occur through a revolutionary transformation of society and human consciousness. Okay, then that's important question that you could be asked. The concept write about the concept of Dalit Chetna, Dalit consciousness. Valmiki and other writers, and you have to write like this. Valmiki and other writers developed Dalit Chetna because they felt mainstream Indian literature had either ignored Dalit voices or portrayed them as villains or helpless victims in need of upper caste saviors. Definition. Main definition. Valmiki defines Dalit as a people deprived of human rights on social level. Key features. Rooted in Ambedkar right thought, it is based on Dr. B.R. Ambedkar's vision of freedom and independence. अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो पता ही होगा स्टोरी. इतना भी नहीं पता तो मैं कुछ नहीं कर सकता. पढ़ो यहाँ जाकर टाइम जाकर. द रिजेक्शन ऑफ हायरार्की. It explicitly rejects the caste system, communism, and hierarchies of language or privilege. Challenge to supremacy. It rejects Brahminism, feudalism, and traditional elitist theories of aesthetics. Revolutionary mentality. It strives to make Dalit conscious of their condition as a byproduct of an oppressive order. The Valmiki's use of autobiography is a deliberate political and literary choice. Subject position. Unlike earlier literature where Dalits were written about, the autobiography allows the Dalit to be the subject and the author of their own story, or the authenticity. It conveys the lived experience and what is it like to grow up in the bottom of the social ladder. Educational tool. It serves as a way to arouse consciousness by presenting the reality of an unjust and heartless
order. The next important will be write about the critic of earlier literature framing. While Valmiki acknowledges creators and writers like Premchand that were sympathetic to Dalits, he offers a sharp critic, lack of agency. Valmiki argues that in the stories like Deliverance, Sati, Dalits suffer but hardly ever protest, missing voices. He feels Premchand failed to give Dalits their own voice or agency, treating them as an object of sympathy rather than the active participants in their own emancipation. The next important question could be write key themes for the exam analysis. And these key themes are mainly education as empowerment, economic deprivation, pride and self-respect. Education as empowerment. The text details the heroic struggle of a Dalit boy to obtain an education against impossible odds. Economic deprivation. It highlights how the oppressive caste order creates conditions where a community is forced into degrading labor and physical deprivation. Pride and self-respect. Dalit Chetna allows for a building of a vision for the future rooted in pride rather than the shame the caste system attempts to impose. Here's a quick revision for you. The term and examination definition rooted. Leftovers symbolizes the dominance and subsistence of Dalits. Bhangi Shura, the specific sweeper caste Valmiki belonged to. Dalit Chetna, or revolutionary consciousness rejecting Brahminical and feudal hierarchy. Alternative aesthetic, a movement to create literature where Dalits occupy the subject position. With this, the brief overview is over. Anyway, all the best for your exam. If you find this video helpful, do share with your friends. And the notes will be, as always, the Telegram. And the password for this this specific chapter is earlier was Sir Hardik 0001. And for this one, it would be Sir Hardik 02. Okay, and all in caps SIRHARDIK 02. Okay. Anyway, all the best for your exam and do subscribe to the channel. Okay. Bye. Yo, what's up guys? Welcome back to Learn Business. और कैसे जा रहे हैं सबके एग्जाम्स? होप अच्छे ही जा रहे हैं. हमारे होंगे फिर तुम मुझे देख रहे हो. अच्छे ही जाने चाहिए सबके. Anyway, अभी तक as you guys have followed me and watching this fourth video, we are currently discussing the course, the individual and society, and we have covered. And currently we are doing unit one, and we have discussed three chapters. First one was the Caste Laws by Jotirao Phule. Second one was Sadhki by Premchand. ठीक है, ये हो चुका है डिस्कस. लास्ट वीडियो में ये हमने सादगी कर चुके हैं डिलीवरी. लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था. कहाँ गया? फ्रॉम झूठन बाय ओम प्रकाश स्वामी. एंड नाउ we are going to start with the topic 4, Kalu by Ismat Shuktai. नाम कास्ट बहुत ज्यादा हुआ है. फर्स्ट टाइम सुना. मतलब जब नोट पर आया तब भी सुनी थी, लेकिन रियलिटी में ऐसे किसी बंदे से नहीं मिला. एनीवे, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. और ये नोट्स अगेन टेलीग्राम में मिलेंगे. एंड अगेन पूरी वीडियो देखना. वीडियो में पासवर्ड होता है नोट्स का, ठीक है? तो नोट्स ऑब्वियसली नोट्स वैसे तो नहीं है, लेकिन नोट्स के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे कि वीडियो देखनी पड़ेगी और नोट्स मिल जाएंगे. ये नोट्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड है. और अगर कोई भी आपको लर्न विद एंडलेस के नाम से नोट्स बेच रहा हो या आपको मिले जो पेड हो, पहले बता दूं, लर्न विद एंडलेस के नोट्स फ्री हैं. ठीक है, मैं खुद ही बना रहा हूँ तो फ्री है. ठीक है.
You just have to subscribe. चैनल में सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ यार. Subscribers अटके हुए हैं. Come on guys. Anyway, let's get started. बहुत बातें हो गई इधर उधर. So the important topic, the questions that could be asked. First would be the right about. It could be asked like वैसे इतना डायरेक्ट आते नहीं है, लेकिन तब भी थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाएगा तुम लोगों को. इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट लिटरेसी कंटेक्ट literary context. Ismat Chugtai, 1915 to 1991, is a renowned Urdu writer known for her bold, realistic, and often controversial depiction on female sexuality and social issues. The story Kalu, unlike some of her more provocative works, Kalu is a subtitled but powerful critic of the intersection between class, caste, and familial hierarchies within an aristocratic Indian Muslim household. Narrative style, Chugtai, Chagtai, it's Chugtai or Chagtai, I don't know. Chagtai is better. Chagtai uses a first person narrative, a young girl in a family, to provide an insider outsider perspective on the events, highlighting the casual cruelty of class distinction. Okay, now you could be asked like these questions. You write about the character analysis, the transformation of Kalu, the story, and you have to write like this. The story centers on the radical transformation of the protagonist from a domestic servant to a high-ranking official. Kalu, the servant, initially a young orphan boy employed for many labor, cleaning, running errands, etc. He is subjected to constant verbal abuse and the physical chores that are far beyond his year. Mr. Kalimundan, the official. Later years, Kalu returns as a sophisticated, well-educated, and high-ranking government officer. His name changes from diminutive Kalu to a respectful Kalikumuddin, symbolizes his shift in social status. The irony of identity. The family that once treated him as a subhuman is now desperate to claim him as one of his their own to secure a high-status marriage for their daughter Salma. यार दुनिया बहुत मतलब है भाई. सक्सेसफुल लोग ही चलते हैं भाई. तभी भाई अच्छी तरह अपना पैकेज लो. डीयू से मिलना तो है, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी. स्किल्स डेवलप करो, डिग्री से कुछ नहीं होता. उसमें मैं तो बनता ही नहीं बहुत बोल रहा हूँ. कोई नहीं. फिर मैं अलग चलेगा टॉपिक. कोई नहीं. Next important question would be themes of class and social mobility. What would be the question we will like the write about the themes of the class and comment on the social mobility. What are your thoughts? Right? You can write like this. The rigidity of class. The story illustrates how upper middle class family views their servants not as individuals but as tools. Kalu's values as child is purely functional. Education as a leveler. Kalu's transformation is made possible through education and leaving the toxic environment of the household. This echoes the themes found in Phule and Valmiki's work that mobility is often tied to escaping a fixed social location. Hypocrisy of the elite. The family's attitude shifts from a utter contempt to fawning admiration once Kalu achieves power. Their, their social, their social rules are revealed to be fragile and entirely dependent on economic and political status. समझे? मेहनत करो ना, घर वाले भी नहीं करेंगे कभी. तो रील वाली बात है भाई. Next important thing would be write about the key plot points and the symbols. These are these can be the three main key points. The request for guava. A pivotal moment in the story offers when a young Kalu asks for the piece of fruit and is brutally rebuffed. This small act of desire is treated as a major transgression of class boundaries. The marriage proposal. The central conflict arises when the family realizes that the Kalimudan everyone is talking about is their former servant Kalu.
The irony is that they now want him to marry Sharma, whom they previously thought was too good for him. The ending. The story concludes with a sharp realization of how social labels like Kalu are used to diminish human dignity and how quickly those labels are discarded when they are no longer serve the interests of the powerful. This next the summary for the exam essay. The critic of the middle class values, Chuck Thai exposes the casual immanent that exists within the respectable homes, the voice of the subaltern. While the narrator is a part of the upper class family, the focus on Kalu's silence is eventually this success gives a voice to the marginalized. Intersectionality. The story is an excellent study for how class functions similarity to the caste in the Indian context, creating a hierarchy of both that is difficult to break. Here's a quick revision for you. Here are the main aspects and their analysis. Protagonist is Kalu or Kali Mudin. Symbolize, it is a symbol of social mobility. Uh, the color from Kalu with disrespect to respect. Central conflict. इस मुझे वेब सीरीज याद आई ना टकरा के मेरा वो आईएएस बोलता है मैं सोच रहा हूँ कुछ याद तो आ रहा है सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट द कंक्लूजन ऑफ पास्ट क्लास status with present professional status. The main key symbol, the guava, represents the simple human desire denied to the poor. The author's goal. The author's goal is to mock the vanity and hypocrisy of the aristocratic classes. Anyway, with this chapter is over. All the best for your exam from the Learn with Endless team, जो मैं हूँ तो मेरा भाई हेल्प करता है कभी ऐसी बात नहीं बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग डू शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स नोट्स आगे टेलीग्राम पे और इसका पासवर्ड क्या रखें इसका पासवर्ड रखते हैं जैसे बाकियों का सर हार्दिक करके ही था इसका भी सर हार्दिक करके ही है ये फोर्थ चैप्टर है तो इसका 03 कर देते हैं ठीक है तो मेन है एस आई इसका पासवर्ड है SIR HARDIK 03 इन ऑल कैप्स ओके एनीवे शेयर कर देना भाई सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए मेरे सब्सक्राइब लोग करते नहीं है लोग सब कुछ ही होते हैं क्या बात है यार सब्सक्राइब तो करो यार नोट्स तो सब क्लेम कर रहे हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर रहे हैं हाँ नोट्स मेरे सर्कुलेट भी हो रहे हैं लोगों के पास मुझे पता चल रहा है सब्सक्राइब भी कर दो यार चलो बाय सी यू गाइस सून बाय yo my dear YouTube family welcome back to Learn with Alice. Today we are going to start with the new chapter, chapter number 5 of the school, the individual and society. Earlier we have discussed, since we are discussing union caste and laws, we have discussed so far the caste and laws by Jotirao Phule. Second was the deliberate sadhgi by Premchand. And the third one was from Jhutan by Om Prakash Valmiki. And in the last video, we discussed about Kalubai Smart Chinka. Okay, now we are going to start with the next chapter, Bosom Friend by Sira Bansode. Before starting this, I would just want you guys to subscribe to my channel. And ये सारे notes Telegram पे available है. But notes password protected होंगे. And for that password, you have to watch the whole video. ठीक है? बाकी अगर वीडियोस हेल्पफुल लगे और वो लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना और सब्सक्राइब करा लेना उनसे भी ठीक है बाकी अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है वगैरह मेरी मेल है यूट्यूब पे अवेलेबल है बाकी टेलीग्राम पे मैंने ओपन करा हुई है एक चार्ट तो उस पर भी चार्ट कर सकते हो किसी को और सब्जेक्ट के चाहिए और नोट चाहिए आई विल ट्राई टू मेक इट ठीक है मुझे भी टाइम लगता है मैंने तो पहले बता दोगे तो बढ़िया बाकी अगर कुछ वीडियोस में इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ भी चाहिए मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है कुछ हो रही है तो मुझे सजेशंस कर सकते हो कमेंट्स बॉक्स में ठीक है कमेंट यूट्यूब पे इसलिए बाकी वीडियो लाइक करो शेयर करो रुको ताली यही बोल सकते हैं ठीक है
Okay. Anyway, let's get started. Without wasting time, let's get started. अपनी सोच रहा मेरी टैगलाइन में भूल गया था. Okay, the bosom friend. Uh, its introduction to Dalit poetry, to the introduction of Dalit poetry and Hira Bhamasade. The context of Dalit poetry. Dalit poetry serves as a dissenting collection of voices articulating the silent anguish, pain, and anger of the marginalized, of the basically the weaker sections of the society or the oppressed class. Unlike mainstream literature, it focuses on the reality of caste rather than class, exploring neglected experience through a new aesthetic, the subversive aesthetics. This poetry masks itself by rejecting the traditional literacy values like propriety, balance, and restraint. The dissection used is often deliberately submersive, challenging middle class notions of linguistic decency. Dalit woman's perspective. Dalit women's poets primarily focus on internal and external female experiences. They are often described as twice Dalit, oppressed in larger social schemes, and also within their own community. Consequently, their poetry is more introspective, mature, and sober, often celebrating Dalit identity rather than relying on sloganeering about the poet. Hira Banasode is a celebrated Dalit poet who, with the support of her family, achieved higher education and secured a government job. Her poetry is characterized by gentle, understated tone and subtitlearity that powerfully expresses the pain of constant deprivation. The, the next important topic or the important question that could be asked in your question would be the write about the overview of the poem Bosom Friend. Origin. The poem is a part of 1984 collection titled Priyad. Central premises as premise. As the title suggests, the poem focuses on very good female friend, a high caste woman who accepts the poet's invitation for dinner and visits her for the first time. The initial tone. The first paragraph expresses the poet's surprise, admiration, and gratitude towards his friend for breaking through traditional caste behavior. Okay. The next important question would be right about the thematic analysis, caste, tradition, and domestic sphere. In this, you have to write like in these type of points. The paradox of tradition. The poet notes a profound irony. Women are often the worst victims of the oppressive tradition, yet they frequently serve as the most orthodox defenders of the same tradition. This makes the friend's visit even more significant to the poet. Overwhelming gratitude. The poet is initially overwhelmed by the friend's presence and viewing it as a major victory over centuries old social exclusion. Caste versus friendship. The poem explores whether a personal bosom friendship can truly transcend the deeply ingrained structural reality of caste in Hindu society. And for the last important thing, according to me, the summary of the key concepts for the exam, the linguistic submersion. Be prepared to discuss how the Dalit poets like Banasade use language to challenge mainstream poetic transition. Introspection. The contrast the mature, sorry. Contrast the mature overtone of Dalit women's poetry with the more over anger often found in broader Dalit literature. Social realism. The poem highlights, despite the professional success like the poet's government job, the shadow of untouchability and the caste identity remains a primary lived experience. Basically, discrimination is everywhere. We should not, यार. आज की डेट में तो आज के डेट में तो नहीं करना चाहिए भाई. अच्छा है यंग जनरेशन नहीं करती. यंग जनरेशन सबसे ऊपर उठ चुके हैं. समझदार लोग. अब इन चीज़ों पे कास्ट पे नहीं जाते, अब जेंडर वर्ड जाते हैं वो लोग. वो भी गलत है लेकिन तब भी भाई इम्प्रूवमेंट तो है.
Okay, here is a quick revision. There the feature and examination analysis title bosom frame. It symbolizes an attempt at deep cross-caste intimacy. Speaker, a Dalit speaker. The speaker is a Dalit woman navigating professional circles and social experience. The main setting is of a domestic space, a dinner invitation, highlighting the i- intimate reach of caste laws. The key irony: high caste women often uphold the tradition that oppresses them and others. Poetic style, gentle, gentle, understated, and iron laden. All the best for your exam. With this, we are over with this chapter. If you find this helpful, share with your friends. And for this one, the password is going to be Sir Hard 04. Okay, all in caps. I will spell it out with for you guys. SIR. So Hardik HARDIK 04. Okay, with this, just अब यूनिट वन की एक बची है भाई सिलेबस तो बहुत है सीधा बता रहा हूँ ठीक है नेक्स्ट टॉपिक ये होगा पुअर शूद्रास बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ठीक है बाकी एनिमेस यार फॉलो करो यार मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो नोट टेलीग्राम में है पासवर्ड से खोलेंगे फ्री है वहाँ से मैं बताना फर्स्ट नाम बाकी किसी कोई भी दिक्कत हो मेरी मेल है बाकी कमेंट सेक्शन भी है मैं कर लेता हूँ ऑब्वियसली मेल पे टाइम लगेगा लेकिन कमेंट्स में होगा तो मेरे को नोटिफिकेशन मिल जाता है ठीक है मेल में थोड़ी कम चेक करता हूँ लैपटॉप पे ठीक है वो तो यूट्यूब पर मैं बाद में चेक कर सकता हूँ अगर कमेंट्स होंगे तो वो तो मैं वीडियो चेक कर सकता हूँ ठीक है तो शेयर करो यार जल्दी जल्दी और सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ मेरे कोशिश करो यार पहले 500 तो करवाओ नेट करो भाई ठीक है चलो एनीवे थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय सी यू सून बाय ग्रीटिंग्स family welcome back to learn with endless चलो भाई हो गई बहुत ही पसंद शुरू करते हैं as you guys know we are doing the co we are discussing the course individual and society and we are currently doing unit one so far we have discussed the five chapters from this unit and the first one was the Caste Laws by Jotirao Phule. Second one was Deliverance Abgi by Brainchen. Third one was from Jhutan by Om Prakash Valmiki. Fourth one was Kalu by Ismail Chaghai. And from the last video you अगर तुमने देखी होगी you must guys remember uh, the Bosom Friend by Hira Banasule. और आज हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट का लास्ट टॉपिक Who were Shudras by Dr. Beer. सो एनीवेज अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ब्ला 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 और सॉरी ये नहीं बोलते मेरे अंदर का कभी कभी आ जाता है ठीक है मेन कॉमेडी छोड़ो ये नोट्स वगैरह दे आर फ्री हैं दे आर अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और चैनल के डिस्क्रिप्शन में ठीक है अगर कुछ डिस्कशन वगैरह करना है वहाँ पे भी एक फोरम खुला हुआ है ठीक है फ्री डिस्कशन के लिए बाकी कमेंट सेक्शन तो है ही आप लोग स्टार्ट कर सकते हो बाकी नोट्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगे और एज यूजुअल पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी नोट्स के लिए ठीक है तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड और पहले ही बोल दूँ किसी को लग रहा है ये नोट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही है ठीक है पूरी स्टोरी मैं कराऊंगा भी नहीं मतलब मुझे नहीं करा सकते कि मेरे भी एग्जाम्स चलने वाले हैं मेरे भी मैं भी स्टूडेंट ही है फाइनल ईयर ठीक है अभी तो मैं करा नहीं सकता अगर किसी को चाहिए होंगे तो दे कैन डीएम मी श्योरली नेक्स्ट सेमेस्टर में या टाइम आई विल हेल्प यू इस सेमेस्टर में तो मेरी भी होगी यार मेरी भी ग्रेजुएशन होने दो ठीक है चांसेस है बाकी
Let's get without any wasting time. Let's get started. So this chapter who was shared by Dr. Manto main focuses on historical revisionism, social philosophy, and critique of Hindu orthodoxy. Introduction: the author, Dr. Bhim Rao Ramji Ambedkar, 1891-1956, was a jurist, economist, and principal architect of the Indian Constitution. As a Dalit leader, his scholarship was dedicated to dismantling the ideological foundations of untouchability. His main work, the work Who Were the Sudras, published in 1946, is the work of historical reconstruction. Ambedkar uses ancient Sanskrit texts to challenge the traditional religious explanation for the origin of the fourth one, its main purpose. The text aims to prove that the Shudras were not an inherently low or slave class by birth, but were victims of specific historical or political conflict with Brahminical. Next, the important question that will be asked on in your exam could be write about theory and the theory of the origin of the Shudras. Ambedkar presents a revolutionary thesis regarding the Shudras' identity. Originally Kshatriyas, Ambedkar argues that the Shudras were not originally a separate Varna, but belonging to the Kshatriyas, the warrior class. ना ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वगैरह ये होते थे वैश्य ये सब इस क्लासेस थी महाभारत में देखी होगी उसमें आती है मैंने तो तुम्हें चार ही याद है मुझे बेटा कितने साल होगा देखे 11 साल हो गए और ये मैं सोच रहा हूँ मैं बहुत बड़ा हूँ ठीक है 22 का ही हूँ फिर परेशान होते रहो इंस्टाग्राम पे भी पहले ही आया था मेरी पर्सनल आईडी पे एक तो इतना भी बड़ा नहीं हूँ भाई द कॉन्फ्लिक्ट There was long and violent struggle for supremacy between the Shudra kings and the Brahmins, the weapon of ritual. To defeat the Shudra kings, Brahmins refused to perform the Upannaya, sacred thread ceremony for them, resultant degradation. Without the Upannaya, the Shudras were socially degraded from the rank of Kshatriyas to a new lower fourth Varna, eventually being denied right to property, education, and dignity. The next important question that will be asked, write about the critique of Hindu social reformers. Dr. B. Ambedkar divides the vocal elements of Indian society into two classes regarding social reform: the political radicals, those who wanted political independence from the British but were independent to internal social reform, the social reformers. Even among these, the Ambedkar notes a lack of secular or intellectual courage. He argues that most reformers try to justify the caste system by finding scientific or logical reasons for it rather than seeking its total the intellectual dishonesty. The Ambedkar identifies a class of clerks, the elite, the educated elites, who use their learnings to not seek the truth but defend their own caste privilege. Basically, the upper class जो एक बड़ी हैं वो चाहते नहीं है बाकी लोग भी आगे बढ़े वो यही था मतलब बेसिकली पहले वो चाहते थे जो लोग नीचे हैं वो नीचे ही रहे जो ऊपर ऊपर है तो बेसिकली रिच वॉन्ट्स की वो रिच रहे पुअर ही रहे बाकी बताओ ना फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेसमैन है अगर हर बंदा ही सीईओ बन जाएगा तो उन्हें अच्छा थोड़ी लगेगा सीईओ मेंटालिटी यही होती है दे वांट एम्प्लॉयज दे वांट नीचे तो बेसिकली यही है दैट्स हाउ रिच बिकम रिच पुअर बिकम पुअर इतना डिफरेंस है बट थैंकफुली कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से वहीं से हमारे अब साइड फ्लिप हो गई लेकिन जब भी क्या फायदा मेन मेरिट बेस्ड होना चाहिए सब तभी फायदा है भाई मेरिट बेस्ड होता तो फायदा है सब एंड अभी फिर टॉपिक से बात चला गया लेट्स स्टिक टू द टॉपिक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन would be write about difference between Shudra versus untouchables, the critical distinction. Okay, remember this. It is vital for the exam to distinguish between the two categories in Ambedkar's work. Shudras, the fourth Varna in Indo-Aryan society, while they were low in the hierarchy, they were still part of
Chaturvarna system and were not untouchable. Untouchables are Shudras. Those outside Varna system entirely. Those are different types. Damn. Oh, sorry, I'm sorry. Historical timeline. यार टाइम इसलिए निकला भाई मतलब डिस्क्रिमिनेशन नेक्स्ट लेवल था भाई ये आज से 100 साल पहले 200 साल पहले भाई थैंक गॉड हम सब सबसे ऊपर ऊपर चुके हैं एटलीस्ट बिग सिटीज बताओ जहाँ मैं रहता हूँ दिल्ली में तो नहीं है ऐसा भाई एक्चुअली मेरे आसपास मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा तो नहीं जज मत करना मुझे हिस्टोरिकल टाइमलाइन Ambedkar argued that while Shudras were degraded through the denial of rituals, untouchability was a later development caused by the broken men theory and the conflict between Brahmanism and Buddhism. Next important question could be as to write about the power of sacred books, write your views on the sacred power of sacred books. Here you can write in these type of pointers. Social laws as demonios. Ambedkar critiques how the Brahmins turned social prestige into divinely ordained laws by making the Sudras degradation part of the Shastras or the scriptures. They made it impossible for a devout Hindu to question the status quo, the decline of the country. He argues that the rigid caste laws contained in the sacred books were primarily a reason for the India's historical decline and fall, as they prevented social unity and collective defense. Next question that could be asked would be about rural literacy and historical methodology. Here you can write like this: non-Brahmin perspective, like Jotirao Phule, Ambedkar insists on a non-Brahmin reading of the history. He encourages readers to look for contradictions in Vedas and Puranas to find the hidden history of Shudra. The role of the scholar. Ambedkar believes a scholar's duty is to be impartial and non-neutral. He openly sides with the oppressed to correct the previous history written by the victim. Finally, किसी ने तो आवाज उठाई काश उसका पूरा प्लान सुन लेते 20 साल तक ही रहते रिजर्वेशन पे Here अरे फिर मैं बाहर चला गया quick revision summary for example. Here are the key concepts and Ambedkar's argument about the original identity. Shudras were once powerful Kshatriya kings. Reason for their fall. Denial of Upannaya, secreted by Brahmins due to political rivalry. Caste reform. Mere political freedom is useless without social democracy. Scriptures. The Shastras are a tool of oppression that must be intellectually challenged. Goal to restore the self respect of the Shudras by showing their noble ancestry. With this, we are over with this chapter and this unit. Okay? All the best for your exam from your dear teacher from you. We can take it. Teacher जैसा हूँ. You can share guidance, senior या friend. ठीक है? Anyway, thanks for watching. बाकी सब्सक्राइब टू माय चैनल और इस एज ये कौन सा था टॉपिक 5 या 6 था मैं चेक करूँ इसका पासवर्ड उसी हिसाब से बनाऊंगा या टॉपिक 6 है ये, ठीक है तो टॉपिक 6 के हिसाब से इसको बनाते हैं इसका पासवर्ड होगा सर हार्दिक 05 ठीक है 05 हो गया ठीक है पहले आउट भी कर देता हूँ लोगों के लिए SIR HARDIK 05 ठीक है विद दिस यूनिट 1 खत्म अब यूनिट 2 देख सकते हो शुरू होगी यूनिट 2 में भी है भाई 5 6 फिर ऐसे करके यूनिट 2 है यूनिट 3 है बहुत लेंथी कोर्स है मैं कह रहा हूँ ठीक है कोर्स तो है लेंथी लेकिन होप इट विल हेल्प यू गाइस ठीक है बाकी सब्सक्राइब कर दो यार सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ फायदा नहीं है भाई मेरी भी वीडियो बनाने का
उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, सब्सक्राइबर बढ़ाओ हमारे। जल्दी जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, सब्सक्राइबर तो बढ़ाओ। ठीक है। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन। Back to learn with LS. Today we are going to start with the Unit 2, Violence and War of the course, the individual and society. जैसे कि हम पहले यूनिट 1 डिस्कस कर चुके, उसमें छह चैप्टर्स थे। ठीक है, आज हम यूनिट 2 शुरू कर रहे हैं। बाकी ये नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। हाँ, नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस तुम लोगों को सब्सक्राइब करना है। चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी, लेट्स गेट स्टार्टेड। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, और इस वीडियो का पासवर्ड आज यूजुअल वीडियो के अंदर ही हो, नोट्स के लिए जो अनलॉक के लिए। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। ओके, सो chapter 1 for unit 2, Return from Swami by Siegfried Sasson. Introduction and content. It is a poem. um, The Return from Swami is a war poem that reflects on the aftermath of one of the deadliest battles of World War One. Historical background: the Battle of Somme, 1916, resulted in massive casualty, wiping out nearly an entire generation of young men and shattering the era's illusions of heroic warfare. Shifting in perspective, unlike earlier literature that allegorized war through legends and epics like Ramayana or Iliad, the 20th century war literature included this poem, often focusing on the folly and the horror of the modern French warfare. Okay, the next important topic that could be asked from this chapter is the themes of the war and violence. In this, you have to write like this points. The inhumane of modern war. The poem draws attention to the horrifying aspects of the violence, moving away from the glorious cavalry charges to the grim reality of the destruction. The common soldier as a subject. The focus is not on the journals or the heroes, but on the common soldiers who suffers the most under the consequences of war, disillusionment. The text explores the shattering views the soldiers who went to the war expecting a noble pursuit found themselves in the state described by the narrator as being like beggars or exhausted, sexless, and associated with that. So basically, the general public suffered while the rich class enjoyed their life. Okay, the next important that could be asked would be about the literary techniques and the literary techniques and the imaginary. In this, you have to write like this: the dehumanizing smiles. The opening imagery often presents soldiers in a state of physical and mental decay. The poet compares beggars and huggers. These descriptions often highlights the sense of drama and strips the soldiers of their perceived military glory. The state of being. The soldiers are depicted as moving from being like beggars to actually being blind, drunk, and deaf due to exhaustion and trauma. Atmospheric language, the use of phrases like curse through slurs and alternative sounds like TOML created claustrophobic and haunting environment for the reader, mirroring the soldier's state of mind. The next important topic would be the critical analysis of this poem from exam perspective. It is a passive non-cooperation, similar to other pacifist work in the unit. Withdrawal from the Swami can be analyzed as the protest against the death as the subsequence of the man's mindless action. There is irony and pathos. The poem emphasizes the empty jingoism of war theoretic by the contrasting the supposed horror of dying for one's motherland with the reality of soldiers being treated as scavenger food or victims of the hunt. The unit's objective for your university exam, Delhi University, you should link this poem to the broader goal of the
Unit 2, Understanding the Emptiness of War Glorification and Persistence of the Modern Violence of Violence in the Modern World. Here's a quick revision summary for your exam. As per central conflict, the reality of the trench war versus the myths of glorious war, key imagery, soldiers as hags and beggars, the sludge of the march, narrator's tone, detached yet powerful, recreating horrors without sentimentality. What is the major lesson of this poem? The war is a mindless game of death where the innocents are victims. Anyway, all the best for your exam. Regards from Hardik Sopti, that is me. And this is my YouTube channel. Do subscribe to it, share with your friends. Okay, so password for this for these notes would be Sir Hardik Sir Hardik 00. I can spell out for you yours too. SIRHARDIK 00. So do share this video with your friends. Anyway, see you next for the next video. Bye and do subscribe guys. I need motivation some motivation. Anyway, बाकी कमेंट से कोई भी डाउट वगैरह कमेंट सेक्शन में कर देना. बाकी अगर और कोई सिलेबस के चाहिए हो तो डू मेंशन द कमेंट्स उसके भी नोट बनाऊंगा. बाय. So, welcome back to Learn with Alice. As you guys all know, we have started the unit 2 and we have discussed this is the chapter 1 of the unit 2 that was written from the Swami by Sigurd Samson. So if you are new to my channel, subscribe to my channel and share with your friends. बाकी इसके नोट्स एज यूज टेलीग्राम में मिल जाएंगे और इस वीडियो पे भी नोट्स पे भी पासवर्ड होगा एंड फॉर दैट पासवर्ड you have to be you have to watch the whole video. So without any wasting time, let's get started with the new chapter. Okay, so here we are, the new chapter, the Dulce ad Decoramus by Wilfred Owen. Well, it's not a technical chapter, it's a poem. Okay, so let's get started. The introduction and context. The poet Wilfred Owen, 1893 to 1918, was one of the most significant English poets of the First World War. He was a soldier himself and died in action in just 1 week before the armistice. Sorry, armistice. The title is taken from the Latin ode by Horace, Deliste es decorum est pro patria mori, which translates to "It is sweet it is sweet and fitting to die for one's country." The purpose of this poem, the poem is a direct attack on this old lie. It was written to expose the gruesome reality of war to the people at home, especially targeted at civilian propagandists like Jesse Pope, who encourage young men to enlist by glorifying combat. Uh, okay, the next next important topic, the stanza-wise analysis. For the stanza one, the condition of the soldier. There is an imagery of decay. Owen often uses shocking smiles to describe the soldiers, bent bent double like old beggars under sacks, and coughing like hags. These descriptions strip away the image of gallant and handsome soldier. Physical exhaustion. The soldiers are drunk with fatigue, blind and lame. They move like zombies through the sludge, disconnected from the danger, and around them until the gas shells drops. For the next stanza two, the gas attack. These are the three main key points: the shift in the pace, the green light, and the victim. The shift in the pace, the sudden cry, gas, gas, quick ball, boys, change, slow and rhythmic, marching into the foaming panic. The green light, the poet describes the scene through his
gas mask as being under a green sea. This creates a surreal underwater night. The Witcher. One soldier for one soldier fails to put on his mask on time. The poet watches him guttering, choking, drowning in the poisonous air. This image haunts the narrator's dreams thereafter. Okay, for the stanza three, the reality of death. There is graphic realism and the main goal of the discourse. For graphic realism, Owen often describes the body being flung into a wagon. He provides a visceral details of the physical effects of gas, white eyes writing in his face, and the sound of the blood gargling from the front corrupted lungs. The goal of the discourse, by using words like vile, incurable, and absence, Owen ensures that the reader feels the same physical revulsion he felt, making it impossible to see the death as noble. Okay, the next important topic that could come for your exam would be uh, write about the major themes of the thing of this poem, and these are the three major themes. The pity of war, the old lie, PTSD and trauma, legiscism and women, the pity of war. Owen famously stated, "My subject is war and the pity of war. The poetry is in the pity." The poem focuses on the shared humanity and suffering of the soldiers rather than the political or nationalistic goals. The old lie. The poem serves as a refutation of the romanticization of war. It contrasts the innocent child at home and ordained for some desperate glory with the corrupted reality of battlefield, PTSD, and trauma. The narrator mentions that in all my dreams, he sees the dying man. This highlights the psychological scars that survivors carry long after the physical battle. Literacy technique. Next important topic. That would be the literacy technique used in the poem. There is diction, irony, and the structure. Logisticism and man, Owen. Diction. Owen uses harsh and discordant sounds, cacophony, to mirror the violence of the war. That is knockhead, sludge, gargling. Irony. The central irony is the contrast between the high-sounding Latin motto and the obscene way the soldiers actually die. The structure. The poem structure is broken and uneven, reflecting the chaotic and proud nature of the gas set. So let's pause for a second. The password of this video would be for this video notes would be Sir Hardy 01. Let me spell it for you. SIRHARDIK 01. All in caps. Okay, let's get back to the topic. Okay, so here is a quick reasoning table for exam. Let's get on with. Uh, Feature analysis, main target, gnostic civilians, and the whole idea war is glorious. Key metaphor, war as a sea where soldiers drown in poisonous gas. Visual imagery, beggars, hags, gouged in world eyes writing. Tone, the tone of the poem is bitter, angry, and deeply compassionate. For example, villains. Contrast this with the return from the Swami or older epics that celebrate war. Okay, anyway, with this topic is over. This chapter is over. Okay, all the best for your exam. Regards from Adik Soti. That is me. Anyway, subscribe to my channel. Share this video with friends if you find this helpful. You just have to subscribe to minutes. नोट्स फ्री हैं सब टेलीग्राम में मिल जाए और मैं भी यही करता हूँ नोट्स फ्री हैं ठीक है बस वीडियो देखो वीडियो के अंदर पासवर्ड है और तुम्हें मिल जाएगा बाकी अगर कुछ भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन ओपन है ही
और बस anyway यही है. Okay, so bye. You guys, what's up? Another brand new day, and welcome back to Learn with Ellis. As you all know, हम द इंडिविजुअल सोसाइटी कर रहे हैं, ये कोर्स कर रहे हैं जी का. सो लैपटॉप की बैटरी कम हो गई. ओके, नाउ बेटर. ओके, सो हम यूनिट 2 पे हैं. फर्स्ट टू चैप्टर्स डिस्कस हो चुके हैं. रिटर्न फ्रॉम समी बाय सिगफ्रिड सैसन. इट्स डन. आपको वीडियो मिल जाएगी इसकी मेरे से. एंड दिस वन इज आल्सो डन. द डल्स आर्ट डेकोरमिस्ट बाय विलियम फ्रिंड. ये दोनों पोएम डिस्कस हो चुके हैं. ठीक है. इनके नोट्स टेलीग्राम में है, फ्री है. बस इसका पासवर्ड होगा, उसके लिए पूरा वीडियो देखो. वीडियो के अंदर पासवर्ड है. ठीक है. बाकी नोट्स फ्री हैं. ठीक है. अपने दोस्त को शेयर करो, सब्सक्राइब करो. ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द थर्ड वन. ओके, so the third one is conscious object by Ada Saint Vincent Millay. Okay, so the here is the introduction and core argument. Definition of the term: a conscious or a conscientious objector is an individual who refuses to perform military service based on moral, religious, or ethical grounds. The poet stands. Ada Saint Vincent Millay adopts the persona of a person who will not cooperate with the business of death. Unlike traditional war poetry that focuses on battlefields, this poem focuses on act of non-cooperation. Major theme. The poem is a declaration of personal and moral resistance against the forces of violence and war. Okay, for the for the important next topic that could become in your exam from this would be the write about the personification of death. Okay, so you can write like this: Death as an individual. The poem personifies death as a physical entity, a rider on a horse who is in business making preparation for war. The horseman imagery. Death is depicted as a business-like figure who is constantly on the move, looking for recruits and victims. So, what's the poet's relation with death? The narrator treats death as an intruder or an enemy to whom she owes no loyalty. She explicitly states that while she knows death will eventually take her, she will not help him in his work. Okay, the next important term that would become right about the refusal to cooperate in context with the poet, why distinct views and such. Okay, in this you can write like these key points. Okay, non-assistance. The narrator lists specific things she will not do to help death. She will not hold the horse while he enters the house to wake a wit. She will not provide information about the whereabouts of others. I will not tell him which way the fox ran. She will not give him a map or directions to help him find his next target. Okay, the moral integrity. The poem emphasizes that even if refusing to help results in her own suffering or death, she will remain true to her conscience. Oh, wow. She is a woman of integrity. Man of integrity. Okay, so now for the next important topic that communism would be right about the social and global critique in context to this poem. Okay, so in this, you have to write in such points. The war is an harvest. The poem suggests that that views war as a productive activity or in a harvest, collecting ammunition and soldiers like resources. Second pointer would be the universal victimhood. By mentioning the fox and the brother, Millay suggests that the war and violence destroys both nature and humanity indiscriminately. Okay, anyway, guys, this is a these notes are precise and concise. You can even elaborate these points like the mention of fox and a brother, nature and humanity. Obviously, अगर तुम एक लाइन का लिखोगे तो तुम्हें इतने नंबर नहीं मिलेंगे. अगर डीयू में तुम्हें पता है जब इतने
लेंथी लेंथी लिखने पड़ते हैं आंसर। ये प्रिसाइज रिवीजन नोट्स हैं। बाकी बनाना और इसको इसको स्ट्रेच करके एक्सप्लेन करके लिखना वो तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। अगर किसी को लगेगा छोटे नोट्स हैं वगैरह, ये प्रिसाइज नोट्स हैं, इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, आ जाए तो तुम्हें बस एग्जाम एक्सप्लेन जरूर करना पड़ेगा, मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की, क्योंकि तुम ये अगर पढ़ के गए हो तो तुम इसके अपने पॉइंट्स बना के इसको लेंथ लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में। तुम जरूरी नहीं है तुम मेरी वाली सेम वोकैबुलरी यूज, हो सकता है लोगों की मेरे से भी अच्छी वोकैबुलरी तुम यूज कर सको। वैसे मेरी वोकैबुलरी इतनी अच्छी है नहीं, बेसिक ही है। तुम लोग बेटर यूज कर सकते हो जो एग्जाम में याद आए और कॉन्टेक्स्ट करके। अब इसमें यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन में मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी है, तुम इसी में 5 पॉइंट्स बना सकते हो बनाने को, ठीक है। चलो लेट्स टोटल। Third would be the folly of compliance. The poem argues that those who assist in war efforts, whether by enlisting or by aiding the military machine, are essentially helping death perform his grim business. Okay. The next important question would be right about the comparison with other word points in context for example. Okay. So this poem versus Owen and Sanson. Okay. While Wilfred Owen focuses on pity of war and physical suffering, Siegfried Sanson uses satire to attack military lie. Miller focuses on individual agency and moral choice. And in contrast, and this poem in contrast with Bertolt Brecht's like Bert's journal, Your Tank is a Powerful Vehicle. Miller highlights the limitations of the war machine when it faces thinking, resisting, and human being. Okay, for the next topic. Okay, that type of questions that we write about the key literacy techniques for exam. Huh? Here are just some of the key literacy: diction of resistance, atmospheric imaginary, symbolism of the map. Let's see discuss them one by one. Diction of resistance. The repeated use of I shall not and I will not creates a tone of absolute defiance. Atmospheric imaginary. The description of the dark stalk and the clatter of the hooves create a sense of impending doom that the narrator bravely faces. Okay, next one. The symbolism of the map. The map represents the intellectual and the physical aid that the citizens provide to state during times of war. Anyway, the password, pause for a second. The password for this video, notes for this video, not this video, the notes for this, that part of the would be Sir Hardik 02. Let me spell out for you: SIRHARDIK 02. Okay, all in caps. Let's get back to the topic. Here is a quick revision summary for you guys. Aspect and the key concepts. Okay, the first aspect would be persona. Okay, a deviant individual refusing to aid the death rider. Okay, the action. There is a total occupation. The narrator refuses to hold the horse or give directions because of some morality or integrity. That's our philosophy. Okay, the philosophy. The moral objection is a higher duty than nationalistic compliance. Okay, one should have his or her own choice. और क्या ये थोड़ी है nationalist बनने के चक्कर में सब करते रहो. Okay, personification. That is a busy calculating businessman of all us. Uh, that is a सदागर, मौत का सदागर. हिंदी का ये वर्ड अच्छा है. Okay, anyway, but this chapter is over. All the best for your exams. If you like this video, share it with your friends, like and subscribe. Notes on Telegram. Password बता दिया वीडियो में. Okay, चलो bye. See you again in the next video. Bye.
और सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ यार, बोर हो रहा हूँ मैं। सब्सक्राइबर्स बढ़ ही नहीं रहे। और बाकी कमेंट सेक्शन में बता देना अगर कुछ और वीडियो चाहिए हो। ठीक है, जो सब्जेक्ट की चाहिए उसके नोट्स बनाऊंगा और वीडियो पोस्ट करता हूँ। ठीक है, बाय। So yo guys, how's everyone doing? Welcome back to Learn with Less. So guys, uh, we were doing unit 2 of the course Individual and Society. So far in the unit 2, we have done the first three poems. This is the first three poems. That were the Return from Swami by Secret Sastam. Second one was the Dulce and Decoramus by Willow Friend. And the third one was the in the last video we discussed the consciousness objective by the Adams and family. So now we are going to start with the fourth one. That would be Naming of the Parks by Henry Reid. Anyway, before starting, I would just like to thank you guys for subscribing to my channel. Actually, I was surprised कि मेरे subscribers बढ़ने शुरू हो गए एक एक करके भी. And it's good. बाकी notes are free of course. They are available on the Telegram channel. Okay. हर नोट पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ताकि मैंने थोड़ा सा इंटरैक्टिव नोट्स काइंड ऑफ बनाए हैं। बाकी तुम लोगों की मर्जी है, तुम वीडियो स्किप करके नोट्स ढूंढ भी सकते हो। तुम्हारी मर्जी है, अपनी ऑनेस्टी होती है, अपनी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी। ठीक है। हर वीडियो के अंदर पासवर्ड है नोट्स का। ठीक है। हर नोट्स के पासवर्ड अलग भी है, लेकिन मैं पहले स्पॉइलर तो ऑलमोस्ट सेम ही है सारे। ठीक है, पासवर्ड्स जो मेरी वीडियोस कंटिन्यूस देखता है उससे पता ही चल जाएगा। ठीक है। बाकी अपने दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो की भी शुरुआत कर लेंगे। ठीक है, हम लोग छोड़ देंगे वीडियो। ठीक है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नेमिंग ऑफ पार्ट्स बाय Henry Reid. The introduction and context. The poet Henry Reid, 1914 to 1986, was a British poet and a radio dramatic. He wrote this poem during his own military training in the Second World War. The setting. The poem is set during a military instruction lecture where recruits are being taught the different parts of their service rifle structure. The poem is famous for its dual voice or counterpoint structure. Each stanza is divided between the voice of the drill sergeant and the internal thoughts of a recruit. Okay, the next person that could come from this poem would be write about the voice structure mentioned in the poem. The sergeant's voice, represented by the first three and a half lines of each stanza. It is technical, monotonous, repetitive, and instructional. It focuses on depth, weaponry, and mechanical precision. The recruit's voice, represented by the later half of each stanza. It is lyrical, poetic, and observant. It focuses on life, nature, and beauty of surrounding spring landscape. The contrast. The poem creates a sharp tension between the artificial world of war, metal parts cleaning, and the natural world world of life, flowers, bees, spring. Okay, the next important topic. अबे यार ये क्या लाइट आज जा रही है? Okay, well, sorry for the difference here. Maybe the time was lagging. Okay, for the next important topic will be stanza wise. Write about the stanza wise thematic breakdown. Okay, let's get them one by one. Okay, stanza one, the occasion. Instruction. Today is the part of naming of parts, especially the rifle. Irony. The surgeon notes that they had daily cleaning yesterday and will have what to do after firing tomorrow. This shows the rigid, scheduled nature of military life, nature's presence. The recruit notices the japonica, a flowering shrub. Listen, listening in the neighboring garden,
which the sergeant ignored. For the stanza two, the shrivel, civil instruction focuses on upper slings field and lower slings field. The metaphor. The recruit watches the branches of the tree, noting that they hold in the gardens their silent, equivalent gesture, contrasting the silent beat of the trees with the loud mechanical function of the rifle. For the stanza three, the safety catch. Instructions. The sergeant explains how to release the safety catch using the thumb. Sexual overtone. The recruit's mind wanders off to the bosom that the fragile and idle do not have a safety catch, and the flickering of the flowers. This is the subtitle sexual undertone in this recruit's focus on the easing of the spring. I will not discuss that at all. Okay, the stanza four, the bolt. Instruction. The sergeant talks about the bolt, the breach, and the cocking piece in nature's life. The recruit observes the bees assaulting and fumbling the flowers, while the sergeant teaches the assault of the war. The recruit sees the assault of the life, pollination slash nature. Okay, the next important thing would be could be that to be asked and would be that to be asked in your exam would be write about the major themes of the exam. For example, okay, here are the major themes: dehumanization of the individual, the nature versus war, resistance to imagination, the futility of war. In this, let's discuss them as well. In this, you have to write like the dehumanization of the individual. The military attempts to turn the recruit into a machine. The sergeant treats the rifle part as more important than the humans holding them. Nature versus war. The poem suggests that while humans are busy naming parts of the killing machine, the world of nature continues its cycle of rebirth and spring, oblivious to human violence. Resistance to imagination. The recruit's wandering mind is a form of passive resistance. By focusing on the flowers and bees, he refuses to let military completely occupy his consciousness and become a tool of a basically regardless of a Terminator or a killing machine. He's a human with his flaws and his emotions और वो चंचल हिंदी में कहते हैं ना वर्ड क्या बोलते हैं उसको चंचलता basically a wandering mind like kid mind hyperactive need something ADHD problem. Okay. The last would be the futility of war. By placing the technical jargon of the rival next to the beauty of the spring, Reed highlights how absurd and idle the preparations for war are compared to the vastness of the natural world. Okay. The next topic that could be asked would be right about the literacy techniques. And here they are ambiguity and pun, repetition and imaginary. Ambiguity and pun. Words like spring are used with double meaning. The mechanical spring of the rival and spring season of river. Repetition. The sergeant's repetition of which in your case we do not have highlights the deprivation and the lack of resources or humanity in military imagery. The shining of the japonica versus the polished metal of the rifle. Anyway, pause for a second. The pause. I'm giving you the password. The password for this video shall be Sir Hardik 03. Let me spell it for you guys. SIRHARDIK 03, and it's all in caps. So let's get back to the topic. Quick revision table. Here are the main components. Then the military with sergeants and natural recruits. Okay. Main focuses on
हम दोनों ड्युअलिटी देखेंगे, दोनों के वर्ल्ड पर्सपेक्टिव्स देखेंगे. Okay, main focus for the military word would be rifle, broad, breech, 50 catch, and from the surgeon's perspective. But from a natural word recruit's perspective, his main focus is one on japonica, bees, flowers, spray. Basically, he was all about military, discipline. And the recruit was like had a mind of a naturalist, or you can say of a kid. He basically sees the world and nature. He wasn't disciplined at all. I don't know why he was in the military. Okay, the tone. The sergeant's tone was command, technical, and bold, while the recruit was sensual, distracted, lyrical. Action. The sergeant's mainly was naming the parts of the rifle, firing, okay, target training, and cleaning their rifles as well. And for the recruits, it was G listening, fumbling, flossing, flaws, etc. The main purpose. The sergeant's main purpose was to destroy, to war, as it is in war. And the recruit's main was to create life production. Yeah, basically, one is as a destroyer, and other was a creator, kind of bullshit. Oh, sorry, I was not a destroyer, but what I am saying. Yeah, सच ही बोलता हूँ. बोरिंग है बहुत. मैं तब भी सर्जन के साइड हूँ. और मैं भी भाई, अगर मैं सोचने लग गया तो हो गया. Anyway, with this, we are over this video. All the best for your exam. If you like this video, share with your friends and do give me a thumbs up and subscribe to my channel. Okay, thank you, subscribers. See you guys soon. Bye. La, 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 la. So, welcome back to Learn with National. और क्या हाल चाल सबके? As you guys know, we are doing the unit 2 of the course Individual and Society. Okay, unit 2 में अभी तक हमने 4 डिस्कस कर ली. The return from the Sony by Secret Sanson. ये हो गई. इसकी वीडियो मिल जाएगी. डल से डेकोरोमिस्ट बाय विल्टमो में ये भी डिस्कस हो गई. इसके में मिल जाएंगे नोट. सारे चैनल टेलीग्राम पे मिल जाएंगे. और नोट्स के पासवर्ड एज यूजुअल वीडियोस में ही है और मिल जाएंगे तुम्हें. बाकी मेरी वीडियोस देखो. बढ़िया. सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं. सब्सक्राइबर बढ़ाओ मेरे को. ठीक है. द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी ये भी हो चुका है. कॉन्टेक्स्ट इसका सब्जेक्ट ये डिस्कस हो चुके हैं. और लास्ट वीडियो में हमने नेमिंग ऑफ पार्ट्स भी कर लिया बाय हैंड एडिट. ठीक है. अब न्यू पोएम पे चलते हैं. नए पे चलते हैं. ठीक है. ओके. For this video, we are going to do the General Tank is a powerful vehicle by Belt of Welch. If you are new to my channel, subscribe to my channel. I want guys support. नोट फ्री है. नोट सारे टेलीग्राम पे. और वीडियो के बीच में एक पासवर्ड मिलेगा. उसी से नोट्स अनलॉक हो जाएंगे. ठीक है. तो वीडियो एंड तक देखो. छोटी छोटी वीडियो है. 10-10 मिनट की बनाता हूँ. उससे बड़ी नहीं बनाता. उससे बड़ी होगी भी तो वो काइंड ऑफ वन शॉट्स हैं. ठीक है. वन शॉट भी मतलब पूरी वीडियो की. ठीक है. एनीवे, लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में कर देना. ठीक है. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिजॉल्व them. ठीक है. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके. फॉर दिस पोएम, द इंट्रोडक्शन context. The poet Bertolt Brecht, 18, 1898 to 1956, was a German poet, playwright, and theater director. He was committed anti-fascist and socialist who believed art should be a tool for social and political change. Literacy movement. Brecht is famous for epic theater, which aims to make the audience think critically about a situation rather than just feeling emotions. The poem. This poem is a concise and powerful anti-war statement that uses simple logical arguments to expose the ultimate weakness of the military machine. Okay, the next important topic that could be asked in your exam. Okay, the next important topic would be this. Write about the structure and rhetorical devices. Okay, addressed to the authority. The poem is addressed directly to the general, representing the high command,
and the state's military power. The yes, but logic. Each stanza follows a specific boundary, and those are acknowledging a military strength, the tank and the bomber, identifying a practical limitation, introducing the fatal flaw, the human element. Okay. The next important question that we write about the analysis of the stanzas. Stanza wise. Okay. So let's choose them one by one. Stanza one, the tank. Strength. The tank is described as powerful. It can smash down forests, crush 100 fellow men. The flaw. It has one defect. It needs a driver. Meaning, no matter how technologically advanced a weapon is, it is useless without a human being to approach it. So basically, the killer is a human ultimately. Okay. The stanza two, the bomber. Strength. The bomber plane is mighty. It can fly faster than the storm, carry more than an elephant. Flaw. It has one defect. It needs a mechanic. Okay, meaning the survival and effect of the machine depends on the labor and cooperation of the working class mechanic. So without mechanic, they can't bomb more planes on the fighter. Okay, and the planes obviously needs maintenance after each flight, and it needs refueling as such. So you need mechanics as such. Okay, the stanza three, the human being, the shift, the final stanza shifts from the machine to the human being himself. The paradox. Birch writes, Journal, man is very powerful. He can fly and he can kill. The ultimate defect. He has one defect. He can think. Meaning, this is the climax of the poem. The defect, from a journal's perspective, is the human capacity for reason, morality, and dissent. If a soldier thinks, he might refuse to kill or drive the tank. So basically, the ultimate deciding factors are the humans. Basically, it's up to the soldier. He wants to pull the trigger or not. He wants to take a life or not. He has to take the order or not. And often in the war, people get froze up and just does not want to kill the other person. A person becomes a coward. The person thinks that now they have to take a life. So they got to know about the meaning of life as such. वगैरह. Basically, उन लोगों को ये नहीं समझ आता कि लाइफ का भी मैटर है वेट है. They get to know that life is not easy for everyone. Ultimately, the soldiers, everyone is just defending their own cause. Okay, topic से बाहर चला गया मैं. कोई नहीं, let's stick to topic. Okay, the next important topic will be write about the major themes in context to the exam. There are the few major things: the power of reason, technology versus humanity, critique of military hierarchy, anti-fascism. Let's discuss them one by one. The power of reason. Both argue that thinking is the greatest threat to the war. A thinking soldier is a defective soldier because he no longer can be used as a mindless tool. Basically, the Birch argues that thinking is the greatest threat of war because he thinks a soldier who doesn't follow the simply follow orders and has his own minding would be an liability in the war, basically, in a fight, because a soldier's main duty is just to follow his superior's orders. Okay. And he cannot be used as a mindless tool. Basically, he compares the soldiers to the mindless tool because in military, basically, lower level soldiers are compared to that only. They just have to listen to their superiors. If one has an opinion or use their own judgment, they are court-martialed. They are stripped of their ranks or get demoted or faces some kind of punishment like deductions or physical punishment. Okay, okay. So the next major thing would be technology versus humanity. The poem highlights that while war technology is mighty and powerful, it is highly dependent on humans. It often seeks to destroy.
Yeah, you can say that as example of the tanks. Where the tanks and bombers are powerful, but they are entirely dependent on humans. A bomber plane can't be bombarded with its rockets and bombers again and again. It needs a human mechanic for the maintenance and type set वगैरह and fueling वगैरह. And same goes for the tank for the maintenance and the fueling of the fuel and the bombs. And it needs a mechanic, and they both need an operator to operate them. So yes, they are maritime power, but it's up to the humans to control. Okay, the next major theme would be critique of the military hierarchy. By addressing the journal, the book mocks the idea of the total control. Journal's power is an illusion because it relies on the obedience of those beneath him. Here, the narrator addressing the option that journal mocks the idea of total. Journal's power is an illusion because in military is a hierarchy. The lower ranking rank have, have to answer and have to obey each and every command of their superiors. Okay, but and military expects them him to be a mindless tool and as such, but you don't have to like that. Here, Birch argues that lower level hangers are also humans. They also have a mind of their own. So it's just about disobedience and action such. Okay. The next would be the anti-fascism. Written during a time of rising militarism in Europe, the poem encouraged individuals to reclaim their agency and refuse to be a useful tool for destruction. Then again, here the poet thing wants you to have your own thinking and not be a rebellious teenager or an individual that just goes on raging and being a tool for others, basically not doing murder and war for others. You have to be a sensible person, be a person first. Humanity comes first. Okay. The next topic would be the literacy technique. There is irony, simplicity, and clarity, and repetition. The poet uses the word defect, ironically, to a journal. A thinking man is broken. To humanity, a thinking man is only hope for peace. Simplicity and clarity. Both uses unpoetic and direct language, mentioning tanks, bombs, and mechanics to make political decision accessible to everyone. Repetition. The repeated structure reinforces the logic of the argument, leading the readers inevitably to the final conclusion. Okay, so the password, let's pause for a second. The password for the node shall be Sir Hardik 04. Let me spell it for you as SIRHARDIK 04. ठीक है उसके बाद let's get back to the topic. सब caps में ठीक है. Here's a quick revision. Weapon slash subject, strength identified, the defect. It's basically limitation. The tank. Here the tank is a symbolism of a powerful stuff. Okay, it's a powerful and mighty tool. It can crush a hard-bred man. Huh. But its main defect, it needs a driver, a human for its work. The same goes for the bomber. It is faster than a storm. Okay, it's a mighty yet powerful tool. It's faster than some, but it needs a mechanic for its maintenance and fueling shit. Okay, and for the last, the weapon or something, the man. It can fly and kill because a bomber plane is operated by man, and it can and and for using these tools you need the man operate. Okay, but his main limitation is he can think. He can't be a emotionless killer machine like the Terminator. Okay, but some individuals can, but most individuals cannot.
टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल पीपल, ठीक है। ठीक है, तो जितने भी स्किज़ोफ्रेनिक के निकले हुए हैं या बेसिकली जो भी कह लो जो अपने आप को समझते हैं टाटा टाटा वाले, नहीं कर सकते, ठीक है। नॉर्मल लोग वाले साइकोपैथ्स की बात नहीं हो रही थी। ठीक है, कंक्लूजन फॉर दीज, ठीक है। In Bird's view, the survival of the civilization depends on this one defect, the refusal of the individual to be a mindless cog in the machine of war. So basically, you don't have to be a cold-blooded murderer, ठीक है। तुम एक नॉर्मल इंसान बन सकते हो जिसका खुद का भी दिमाग है, तुम माइंडलेस मशीन नहीं हो, ठीक है। माइंडलेस मास मास मर्डर बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम अपने ऑर्डर्स रिफ्यूज कर सकते हो, तुम एक एजुकेटेड और एडल्ट इंडिविजुअल हो, तो अपने माइंड की सुना, मतलब वही है, सुनो सबकी, करो अपनी, ठीक है। विद दिस वी आर ओवर with this poem. Okay, all the best for your exam. Regards from Hardik Sopti, that is me. Okay, बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, बाकी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, ठीक है। बाकी अगर किसी और सब्जेक्ट की चाहिए और चाहिए तो डू डीएम मी, ठीक है। जिस भी टॉपिक की चाहिए हो, आई विल ट्राई टू मेक वीडियो, ठीक है। तो बाय, सी यू गाइस, बाय। So welcome guys, welcome back to Learn with Us. मोस्टली अभी तक ज़्यादातर लोग को मेरा चैनल नहीं मिला होगा, तो एक इंट्रोडक्शन फिर बनाना पड़ेगा 10 सेकंड का, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक हम वी आर डूइंग द कोर्स द इंडिविजुअल सोसाइटी, यूनिट 2 पे हैं। यूनिट 2 का अब हमें लास्ट लास्ट पोएम करनी है। बाकी पोएम्स हो चुकी हैं, उनकी वीडियोस तो मैं मिल जाएंगी वीडियो पे, ठीक है। और इनके नोट्स टेलीग्राम पे हैं, जो वीडियोस में कंटेंट है, नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बस। एंड फॉर द पासवर्ड फॉर दोस वीडियोस देखो, वीडियोस के अंदर है। ओके, वी हैव डन द रिटर्न फ्रॉम द सोनी बाय सीक्रेट सेंशन, दिस हैज बीन डिस्कस। ये विल फ्रॉम ओफेंड वाली पॉइंट भी हो गई डिस्कस, ठीक है। ये भी हो गई है, कॉन्शियस के सब्जेक्ट है। और नेमिंग ऑफ द पार्ट बाय हैंड रीड कर ली। एंड इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस द जनरल योटिंग इज अ ओके, फॉर द लास्ट पोएम that would be The Dog of Tetwa by Satsad Hassan Manto. Okay, so without wasting any time, let's get started. Okay, you just have to subscribe, ठीक है। नोट्स वगैरह सब फ्री हैं, ठीक है। बस मुझे सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो यही है, ठीक है। थोड़ा सा हैंड टू हैंड चले तो बेटर है। हाँ, हाथ तो हाथ ही दो यार, ठीक है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन एंड कंटेक्स्ट। द ऑथर Satsat Hassan Manto, 1912 to 1955, is one of the most famous short story writers of the Indian subcontinent. He is best known for his unflinching and bitterly ironical stories about partition of India in 1947. The setting. The story is set in the mountainous border region of the Tetwa, where Indian and Pakistani soldiers are entrenched in hills facing each other during the post-partition conflict. What is the central theme? Manto uses the figure of a dog, highlighting the senselessness and absurdity of nationalism, violence, and the artificiality of borders. Okay, for the next topic, important topic that could become from this story would be write about the plot, the dog as a nationalist. Okay, in this you have to write like the arrival. A stray dog appears in the no man's land between two camps. Interaction with the camp. The dog first wanders into the Pakistani camp. The soldiers named him Zunzun and treat him with casual affection. The dog then wanders into the Indian camp. The Indian soldiers named him Japari and also feed him. The conflict of identity. The soldiers on both sides start obsessing over the dog's nationality. They treat the dog as a spy or a traitor because he has visited the enemy camp. The climax. The dog is eventually caught in the literal and metaphorical metabolism कहाँ से बोल दिया मैंने, पता नहीं, दिमाग खराब हो गया. Okay, the dog is literally caught in literal and metaphorical crossfire as he runs back and forth between two regimes. Both sides shoot at him.
not because he's a threat, but to assert their dominance and claim over it. क्या यार ये बेचारे को परेशान करते हैं. Okay, for the next topic, what term that could be asked would be write about the major symbols and themes. Okay, here are the few major symbols or themes: the dog, the regis, the absurdity of borders. Let's go through them one by one. The dog. The dog represents the innocent victim of war. Unlike humans, the dog does not understand the concept of border, religion, or a nationality. His death symbolizes the death of humanity in the face of nationalistic madness. So basically, Logan Lesh, he's considered traitor from the both sides. एक नेशनलिज्म की आड़ में ठीक है अपने बेचारे एक डॉगी को मार देते हैं ठीक है क्योंकि दोनों साइड्स को अपनी डोमिनेंस दिखानी होती है और ये दिखाना होता है नहीं हमें अपने देश से ज्यादा प्यार ठीक है तो वो बेसिकली ये दिखाने के लिए कि नहीं हम अपने देश से इतना प्यार करते हैं कि हमें किसी और से मतलब नहीं है तो दोनों साइड डॉग को के उस पर हमला कर देती हैं और डॉग बेसिकली एक माइंडलेस तो नहीं कह सकते बेसिकली इनोसेंट क्रिएचर है उसके लिए कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल ही न्यू है ठीक है उसके लिए तो कोई एरिया उसके लिए तो कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है मैं मानता हूँ कैनाइंस के लिए एक टेरिटरी एरिया होता है वो होता है लेकिन वो तो सबको देख रहा है कि ये मुझे प्यार करते हैं दोनों साइड प्यार करती है और अचानक से मार देती है उसके लिए अनएक्सपेक्टेड है बेचारे के लिए तभी वो इनोसेंट विक्टिम है ठीक है and the next the ridges the two hills occupied by the symbolizes the divided psyche of the subcontinent the soldiers are bored and dehumanized by the statement by stalemate that they turned a harmless animal into target for the frustration the border पे रह के रोज फाइट ठीक है रोज मौतें देख के डेथ देख के और कुछ हो नहीं रहा ठीक है दोनों हारने वाले इतने साल हो गए तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने की बेसिकली ह्यूमन माइंड होता ही है ऐसे बेसिकली जब हम लोग बोर्ड हो जाते हैं ना हमें चुल मचती है तो हमें कुछ चीजें ऐसे करनी होती या तो सेल्फ हार्म वाली हो जाती है या किसी और को हार्म वाली हो जाती है ह्यूमन माइंड है ही ऐसा तो इन लोगों को बिजी रखा करो सर ओके द नेक्स्ट वुड बी द absurdity of borders Manto mocks the idea that even an animal must have an identity card or nationality. The dog's inability to choose a side is what leads to his execution by both sides. Here, basically, the author mocks that the dog should have an identity card, basically आधार कार्ड बस आज के तो बनते हुए हैं जोक्स असाइड डॉग्स के अपने खुद के आइडेंटिटी कार्ड्स बनते हैं यू कैन मेक देम एट सर्टिफाइड वेट शॉप्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी बन जाते हैं ठीक है गवर्नमेंट पेट हॉस्पिटल्स में भी बन जाते हैं इवन आई हैव अ डॉग उसका भी कार्ड है जोक्स असाइड उसके हेल्थ कार्ड के फायदे भी हो कि डॉग्स की प्रॉपर वैक्सीनेशन जो हर फ्यू मंथ्स में लगती हैं हर 6 मंथ्स वाली वैक्सीनेशन और जो ईयरली वैक्सीनेशन लगती है वो सब के लिए हेल्पफुल रहता है और आइडेंटिटी के लिए भी रखता है कि बेसिकली एमसीडी वाले या कोई भी वो तुम्हारा डॉग ले जा नहीं सकता ठीक है तो इट्स बेटर बाकी एनीवे इफ वी गो बैक टू द टॉपिक हियर द ऑथर इज मॉकिंग कि उसका एक आइडेंटिटी कार्ड एक होना चाहिए कि बेसिकली कंट्रीज आइडेंटिफाई कर सके ये यहाँ का सिटीजन है चाहे बेचारे से कुछ पता नहीं उसे तो ये लगा था उसे प्यार करें ठीक है समझ आ गया होगा ओके फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वुड बी कैरेक्टराइजेशन द सोल्जर्स ठीक है फ्रॉम सोल्जर पॉइंट ऑफ व्यू सूबेदार हिम्मत सिंह इंडियन एंड हरनान सिंह पाकिस्तानी both characters are portrayed not as villains but as ordinary men who have been driven to a state of moral blindness by war ठीक है dehumanization the soldiers talk to the dog as if it were a human soldier shouting commands and questioning its loyalty this personification of dogs serves to show that how soldiers have lost their own sense of human empathy so basically the here the in this in the story the author say basically compares that the, during war people minds are so messed up that they lose their humanity
they only focus their basically त्याग and such. उन्हें लगता है कि बेसिकली उनका देश सब है या बस होना भी चाहिए, लेकिन बेसिकली ह्यूमैनिटी नहीं उतनी लूज करनी चाहिए अपने कॉज के लिए। ये थोड़ी ह्यूमैनिटी कर दो, ये लूज कर दो। ओके, so next topic would be Manto's bitter irony. Manto uses a dark satire tone. The death of the dog is described as a martyrdom by one of the soldiers, which is stinging critique how the word martyr is used to glorify senseless deaths in war. The story ends up with dog dying in the no man's land, belonging to neither side and killed by both. The ultimate commentary of the tragedy of partition. So basically, in this you can write like that कि वॉर में कैजुअलिटीज दोनों साइड से होती है। innocents are harmed. War in war only innocent people are harmed. ठीक है बेसिकली। और फायदा कुछ नहीं होता, सोल्जर्स रखते कुछ करते हैं, फायदा बिजनेसमैन पॉलिटिशियंस एज सच का होता है। ठीक है, तो हमारा कॉमन पीपल का इतना सच कुछ नहीं होता। कॉमन पीपल में बस हेट्रेड फील होती रहती है। अल्टीमेटली जिन लोगों का फायदा होता है वो बस पीछे से बैठ के घर पे बैठ के एंजॉय करते हैं। ठीक है, बाकी कॉमन पीपल और जो लोग हमारे बॉर्डर डिफेंड कर रहे हैं ऑब्वियसली सोल्जर्स, बकरे भी वही बनते हैं, शहीद भी वही होते हैं। ठीक है, फायदा कुछ है नहीं। मतलब डिफेंड डिफेंड करने का फायदा है, लेकिन अपने सेक्रीफाइसेस वो कर रहे हैं। ठीक है, हेट्रेड कर रहे हैं, हेट्रेड बस बढ़ती है और कुछ नहीं होता। मेन फायदा बिजनेसमैन का और होगा। ठीक है, लोग इतना बोल रहे हैं कि नेशनलिज्म दिखाओ वो दिखाओ। ठीक है, अगर आज भी दो कंट्रीज का होता है तो जो ट्रेड व्रेड है वो लार्ज स्केल के लिए रुकता है या टैरिफ्स वगैरह बढ़ते हैं तो कॉमन पीपल को ज्यादा फर्क आती है, उनके लिए महंगाई बढ़ती है। बिजनेसमैन का कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके उस कंट्री में बिजनेसेस हैं तो बिजनेस चलते रहते हैं, कोई कुछ नहीं बंद करता। उनके वहां पे प्रॉपर्टीज होती हैं, सच होता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी वहाँ की पार्टीज हैं वगैरह हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका बिजनेस चलता रहता है। यही माइंडसेट का फर्क है। जो कॉमन पीपल है वो है, उनको करके हेटेड फील करके वोटिंग वोट्स लो। पॉलिटिशियंस अपने वोट बैंक भरते रहते हैं, बिजनेसमैन अपनी जेब भरते रहते हैं। रिच रिच रहेगा, पुअर पुअर रहेगा। ये सब माइंडसेट का फर्क है। तो बी एजुकेटेड गाइस, हेट फैलाने से कुछ नहीं होता। पर्सनली हेट से कुछ नहीं होता, ह्यूमैनिटी बढ़ाओ। ठीक है, एनीवे, फॉर द पासवर्ड फॉर दिस वीडियो, लेट्स गो विद सर हार्दिक 05। ठीक है, लेट मी स्पेल इट फॉर योर गाइस, SIRHARDIK 05। ठीक है, here all in caps. Okay, for the last, the quick revision table for you. Here the main symbol and their analysis. Main symbol, the dog represents innocence, cost, and political conflict. That I was discussing earlier. कि political conflict में बस बेचारा एक बकरा फंसता है। ठीक है, एक बेचारे लोग ही फंसते हैं, इनोसेंस फंसती है। मेन जो क्लेवर लोग होते हैं, सिंबलाइजिंग फॉक्स ले लो या कुछ ले लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बिजनेसमैन वगैरह। ठीक है, names given: Jafari by Indian soldiers and Zunzun by Pakistani soldiers. Okay, central message: borders are artificial constraint that leads to mindless violence. Ending: the dog is shot by both sides, dying as a victim of identity policy politics. Okay, author style: it's a realistic, satirical, and focused on the pity of human folly. Here's a main tip for you guys. When writing about Manto, always mention that he does not take sides. In the story, both Pakistani and Indian soldiers are equally responsible for cruel and absurd death of the dog. As I've said earlier, कि क्रूअल दोनों साइड हैं, अच्छे साइड दोनों लोग हैं, बुरे साइड भी दोनों लोग हैं। ठीक है, तो अपने माइंड को ब्रॉड करके खोलो। ठीक है, अपनी थिंकिंग को वो करो, अपनी नैरो माइंडेड थिंकिंग से मत करो। गलती दोनों साइड की होती है, एक साइड की नहीं होती। एक साइड की होती है, मैं मानता हूँ कभी कभी ज्यादा होती है, लेकिन एक साइड की कम होती है, लेकिन गलती दोनों साइड की होती है। चाहे एक साइड की 99 और 1 हो, या 50 हो या 50 50। ठीक है,
एनीवे ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मैंने इस वीडियो में ज़्यादा बोल दिया, तो नहीं, फिर भी हो जाता है। ठीक है, एनीवे, रिगार्ड्स फ्रॉम हार्दिक चौधरी, दैट इज मी योर टीचर। यार लेकिन टीचर की फीलिंग तो अच्छी है। ठीक है, कोई नहीं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आई वांट सब्सक्राइबर्स। ठीक है, सब्सक्राइबर्स होंगे तो बढ़िया, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, नोट्स फ्री हैं। मैं अपने टाइम पास के लिए पढ़ाता हूँ। मुझे भी अच्छा लगेगा लेकिन अगर मैं इससे कुछ कर पाऊँ। ठीक है, क्योंकि बेसिकली आई वांट कि मेरा यूट्यूब मोनेटाइज हो जाए और मैं अपनी जो एजुकेशन है ना वो खुद ही सपोर्ट कर लूँ। ठीक है, मैं 22 का ही हूँ, एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है, मेरी बैचलर्स होने वाली है, लेकिन आई वांट कि मैं अपनी आगे मास्टर्स हो और पीएचडी हो, सोची तो अभी तक, कि मैं खुद ही फंड करूँ। ठीक है, मैं ऐसे पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह तो कर रहा हूँ, लेकिन इतनी अच्छी तुम्हें पता है कि इंडिया में मिलती नहीं है जॉब वगैरह फ्रेशर्स को। तो वही है, मेरे को मनी खुद के लिए चाहिए। ठीक है, कि मैं आगे कर सकूँ अगर वो, और एटलीस्ट इतनी वीडियोस बनाता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, तो मेरा भी चले यार। घर वाले से कब तक पैसे लूंगा, अपनी एजुकेशन भी करनी है मुझे फाइनल। ठीक है, चलो, बाय, सी यू। सो वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद एंडलेस। और कैसे हैं आप सब? Right now we are doing the course in the Indian society. So far we have done Unit 1 and Unit 2. Unit 1 consists of the six chapters. We have discussed them. You can watch them in the playlist on my channel. Okay. And if you do find them helpful, subscribe to my channel. And these notes are available on the Telegram. So you can go through them. Notes are completely free, but you do have to watch the video because the notes are password protected and the password is present in the video itself. Okay, so we have done this part. Uh, Also, this one we have done unit total. ठीक है, ये हो चुका है सारा। अब हम आएंगे यूनिट 3। Okay, so we will start with unit 3. Unit 3 is living in a globalized world. ठीक है, so for the first chapter that we are doing would be toys by Roland Barthes. So without any wasting time, let's get started. Okay. So the first important topic would be the introduction to the author and his work. So the author, the Roland Barthes, from 1915 to 1980, was a prominent French literary theorist, philosopher, and systematist. The work, the essay Toys, is a part of his famous book Mythologies, 1957. Methodology. Barthes used semiology, the study of signs and symbols, to analyze everyday objects. He argues that toys are not just playthings, but are signs that carry deep cultural and ideological messages. The next topic, that important topic that could be asked in your exam, would be write about write about the core argument, toys as socialization tools. In this, you have to write like this. Main three key points would be, in which you can write obviously in your own language, would be the prefabricating adults, the user versus the creator, imitation of reality. Let's discuss in a brief. Okay. Prefabricating adults. Barthes argues that the French toys are designed to be prepared children for adult life. They are microcosms of the adult world. The user versus the creator. Modern toys don't encourage a child to create or invent. Instead, they force a child to become a user or a consumer. The child is expected to replicate adult functions, driving a car, feeding a dog, playing house, rather than exploring their own imagination. Imitation of reality. Toys represent a world of objects without myth. They are literal copies of army life, medicine, transport, and domesticacy.
Okay, the next important topic that could be asked in your exam would be write about the materiality of toys. What does is plastic? Journalize or illustrate in your with your own examples of that. So you have to write in your opinion too. Okay, so Barthes makes a famous distinction between the materials used to make toys, which he sees as a shift in human values. Okay, in first contrast would be the traditional, obviously wood. In this, you can write in key points like human connection. Wood is a familiar and poetic substance. It is warm to the touch and ages naturally and for durability. Wooden toys last for generations. They don't shatter. They wear out and creating a lasting bond with the children. The last for generations. Chronic cheeses. Your grandparents must have their old toys, like if you have them, or something like an old chair from your great grandfather's or grandfather's time, stuff like that. Okay. The third point would be the creative potential, would allows for simpler forms that child's imagination can compete. Okay. Now we have discussed the traditional wood, and so now we will discuss the modern plastic slash metal. In this, you can say that the material Bharti said like compares with it with alienation, fragility and viscosity, and fixed meaning. For alienation part, plastic is a chemical and graceless substance. It is cold and sterile. Fragility and disposability. Plastic toys break easily and cannot be repaired. This introduces the child to the throwaway culture of modern capitalism. We nowadays people don't have sympathy for though people don't believe in long-lasting relationships, they just want casual things. Such a messed up generation. It feels pathetic to be part of such a generation, actually. Anyway, let's stick to the point. Okay. Fixed meaning. Plastic toys are often highly detailed and perfect, leaving no room for child to imagine anything other than what the toy already is. Okay. For the next important thing would be that regards in your exam would be write about the key thematic pillars for exam. And for those you can write these three. The denaturalization of play. Barthes challenges the idea that play is a natural activity. He shows that play is culturally constructed to make the status quo current society seem natural and inevitable to the child. Borgogi's ideology. He critiques how toys instill middle class bourgeois values such as ownership, domesticity, and professional roles into child at an early age. The loss of the loss of poetry. The loss of poetry. By making toy out of unorganic materials like plastic, society has robbed the child of sensory and poetic connection to the world of objects. Okay. For the next important topic would be write about the literary and philosophical concepts, and that would be semantic analysis. Read the toy as a text that can be read. For example, a toy soldier is a text about the necessity of war. Signifier and signified. Signifier, the physical toy, that is plastic stone. Signified, the social role. Example, woman belongs to the church. Well, I completely disagree. Honestly, I love to cook. ठीक है मैं माना ये सब ये बेकार है ये जेंडर से सेपरेट नहीं होती चीजें ठीक but you have to write like this because this is literally on the base of Barthes thinking around 19th yeah, around 20th century so we can't talk with it. You have to write into उसी की context में लिखना पड़ेगा भाई फायदा नहीं है okay next topic would be write about the critical summary for in your exam okay इसकी critical summary ठीक है in critical you can write main critic modern toys turn children
into satisfied owners rather than inventors. Social impact. Toys serve as an early training ground for social conformity. Conclusion. But he wanted us to look at the mythology behind the most innocent looking objects. He suggests that the way we play as children determines how we function as adults in the capitalist society. Okay, so for the password for this video will be Sir Hardik 00. Okay, let me spell it for you. SIRHARDIK 00. All in caps. Okay, let's get back to the let's get back to the fun. Okay, for the final revisions summary, I have the bar option. Okay, for the quick revision summary here. Here are the aspects and Barthes views. Function of toys. Barthes views that toys are used for mainly used to socialize children into adult roles. Okay, representation of wood. Wood is represented in his view as a poetic form. It has a human touch and durability, generations of wear and tear, kind of like cozy vibes. And for the plastic and metal, he compares to the modern world, cold, sterile, disposable capitalist thinking, use and throw method, use and throw thinking. Okay. And Chabot's child role, in his view, it is reduced from a demerge creator to a mere owner. Okay. The hidden message, according to the Barthes, the hidden message here is that although life is natural and unchangeable, once you stick to a path, it's very difficult to shift away from it. Okay. Anyway, all the best for your exam. Regards from Hardik. So that is me. Subscribe to my channel. Share this video with your friends if you find this helpful. Okay. So we have started the Unit 3 Living in Globalization. In the earlier video, we have discussed the toys by Roland Barthes. Anyway, yeah, if you are new to this channel, subscribe to my channel. Also, the notes will be notes are okay. Notes फ्री हैं टेलीग्राम पे मिल जाएंगे थोड़ी हिंदी भी बोलनी चाहिए ठीक है मिल जाएंगे बाकी ये नोट्स प्रिसाइज कंसाइज हैं ठीक है पूरे एग्जाम पर्पस से है क्विक रिवीजन के लिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक से पीवाई के एग्जाम के लिए ठीक है सो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो लेकिन पॉइंटर्स हेल्प कर देंगे तुम्हें एग्जाम में ठीक है एनीवे विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट और उसका पासवर्ड जो पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है ओके याद रखना वो वीडियो आप पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी ठीक है चलो लेट्स गेट स्टार्टेड ओके for this second chapter of the unit 3 would be zero sum game by Big by Bro. Anyway, let's get started. The with the introduction of the author and the context. The author by Bro, 1955 to 2024 was a prominent Indian economist, scholar, and translator. The core argument. The core argument of this context, the essay explores the impact of the intellectual property rights, IPRs, and globalization of traditional knowledge, especially in the context of Indian agriculture. Definition of zero-sum game. In the game theory, a zero-sum game is a situation where one person's gain is equivalent to another's loss. Debroy used this term to critique the imbalance between the Western corporate interest and the right of traditional farmers. Okay. The next important topic that would be asked in your exam would be similar, like write about the conflicts between the traditional knowledge versus patent. In this, you can write like this: farmer, while discussing key points like farmer rights. Historically, Indian farmers have shared knowledge and seeds freely for centuries. This communal knowledge is the foundation of biodiversity. You can elaborate in it. Okay. The next pointer would be the corporate encroachment. With the advent of the TRIPs, trade-related aspects of intellectual property rights agreement, multinational corporations begin seeking patents on biological resources. Okay. The next key point would be the problem of biopiracy. De Broglie highlights cases where Western companies patented resources like neem, turmeric, and basmati rice, claiming them as inventions despite their long-standing use in Indian culture. You must have heard about these in the news. Basically, they sell like normal rock salt
etc. would be sold like this part, or is sold very expensively. Okay, it's good for hair health, so ना पिंक सॉल्ट का चला था, फिर इंडिया में भी इसका ब्रांड चलने लगा था, टाटा भी बेचने लगा था, उसमें नॉर्मली वो पैसे भी मिलता था। ठीक है। एनीवे, वैसे ही हमारी मुल्तानी मिट्टी भी, मुल्तानी मिट्टी का भी सेम कॉन्सेप्ट है। मुल्तानी मिट्टी कब से है? अब तो बेसिकली पैकेज में आती है, पहले भी आती थी लेकिन अब तो अच्छी तरीके से ब्रांडिंग्स वगैरह के साथ आती है, और उसका प्राइस लिटरली 700 600 अमेजोन पे है। बेसिकली हर चीज़ कैपिटलिस्ट लोगों के लिए हो जाती है, बेचने के लिए उनके लिए अच्छी चीज़ है, और फॉरनर्स पागल की तरह लेते हैं। अपना पेटेंट कर लो और काम करो, बिजनेस चलो छोड़ो, ऑफ टॉपिक हो गया। ओके, सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वुड बी economic and social impact. ठीक है, राइट अबाउट द economic and social impact. In this, these are the main three key points: monopolization of seeds, impact on small farm, what's its impact on small farmers, and knowledge is the commodity. Okay, let's discuss them. Monopolization, monopolization of seeds. Farmers who previously saved and swapped seeds are now often forced to buy patented seeds from corporations every week. They are basically for because because of जीरो गेम थ्योरी का से ये थ्योरी है कि कॉर्पोरेशन अपने प्रॉफिट के लिए इन लोगों को लॉस कराते हैं। वो बेसिकली गवर्नमेंट से कंसाइनमेंट्स लेते वगैरह लेते हैं और इन्हें डिलीवर करते हैं गवर्नमेंट्स के नाम पे इशूड हैं, सीड्स होते हैं वगैरह, और वो लो क्वालिटी होते हैं, तो नहीं होगा सब। ठीक है। और वो हाई क्वालिटी सीड्स अलग पैकेजिंग करके प्राइवेट ओनर्स को बेच देते हैं, या उनको हाई करके उनको दूसरी यूजेस में करते हैं। ठीक है। इससे कंपनी काइंड ऑफ फ्रॉड भी करती है लेकिन अपना प्रॉफिट करती है। ठीक है। और इनका लॉस होता है तो इसमें जीरो सम गेम लगती है। ठीक है। ये इस बारे में भी लिख सकते हो, एक्सप्लेन करो। ठीक है। इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स अगेन उसी से रिलेट कर सकते हो जो अभी डिस्कस किया, बाकी ये भी लिख सकते हो। Since 58% of India's population relies on agriculture for their livelihood, mostly through small landholding, these shifts threaten the economic survival of the majority. Okay, and for the last key point would be knowledge is the commodity. De Broglie argues that turning life-saving plants and essential crops into private property creates a global inequality where rich get richer at the expense of poor. As सच जो मैंने देखा, कॉर्पोरेशन रिच पावरफुल पीपल वो इन लोगों को फोर्स करते हैं हायरिंग वगैरह से, और इन लोगों को ऑप्शन नहीं होता और ये पुअर से पुअर होते रहते हैं। गवर्नमेंट भी अपनी सब्सिडीज वगैरह टाइम पे देती नहीं, रिलीज मिलते नहीं, मिडिल मैन सब ले जाते हैं। और ऊपर से जो गवर्नमेंट के सेट प्राइसेस हैं क्रॉप्स के लिए और एज सच तुम्हें पता ही है वो बहुत कम है। फार्मर्स लिटरली 2 kg पर अनियंस सेल करते हैं, और मिडल मैन होते हैं, और एक नॉर्मल अब ग्रोसरी पे आते हो तो भैया लिटरली कितने के, अब प्याज जाओ लेने हैं तो मार्केट या मंडी में तो कितने के पड़ते हैं, मुझे आइडिया नहीं है लेकिन 70 60 70 के तो पड़ते हैं। ठीक है जी। और बहुत कम होता है कई हो जाए। और अगर यही तो मॉल्स में जाओ और आगे जाओ तो इनके प्राइस बढ़ते रहते हैं, 100 ऊपर चले जाते हैं। अब ऑनलाइन मंगाओ तो ऑनलाइन में भी है, ऑनलाइन वाले थोड़े सस्ते भी भेज देते हैं लेकिन वही उनकी क्वालिटी कम प्राइस में वो करते हैं कि वो अपनी इन्वेंटरी हाई रखते हैं लेकिन वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ओके, किसी को डिफेम नहीं कर रहा, बाकी टॉपिक पे चलता हूँ। ओके, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट विल बी राइट अबाउट दैट कुड बी आज इन योर एग्जाम, you write about the key themes for the exam analysis. Okay, so the main key themes here are the ethics of IPR, globalization and sovereignty, biodiversity versus monoculture. Okay, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने सिर्फ एक्सप्लेन के उससे लिखा है, लेकिन तुम अपनी लैंग्वेज में लिटरली हर एक के 5 5 पॉइंट्स बना सकते हो, मेरे 3 तो बना ही सकते हो। ठीक है। तो एग्जाम में अपने हिसाब से पूरे पॉइंट्स लिख के आना, ये सिर्फ रिवीजन के लिए, और तुम्हें एक जनरल आइडिया देंगे। ठीक है। द एथिक्स ऑफ IPR, इज इट एथिकल to patent a living organ or a traditional remedy that has existed for centuries? ओके, इस क्वेश्चन के ऊपर ये आ भी सकता है, तो एथिक्स उसके लिए ये अपने आप में भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो इसके बारे में तुम जनरलाइज पूरा लिख सकते हो कि इट्स अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी लिख सकते हो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में कि ये
ऑर्गेनिज्म के राइट्स वगैरह वायलेट कर रहे हैं जो कि चले हुए। और ट्रेडिशनल रेमेडीज में ये लिख सकते हैं कि हमारे फोर फादर्स और जनरेशन हमारे पहले जो आए थे, हमारे एंसेस्टर्स में ये उनकी नॉलेज है। ठीक है, हम ऐसी नहीं, ये नहीं कह सकते कि जो इतने सालों से हैं हम उसे नकार दें। ठीक है, उनकी में भी ट्रुथ में कुछ, उनकी भी नॉलेज में कुछ तो ट्रुथ था, काफी था वैसे। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, और किसी के लिए अब इंडिया में लॉज भी हैं वो भी। ठीक है, ओके। फॉर द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वुड बी द नेक्स्ट globalization and sovereignty. How trade, how international trade laws like those of WTO can undermine the national interests and traditional rights of developed countries like, yeah, WTO, World Trade Organization. You guys must have heard of it. Okay. It has a certain set of rules for all its members. Okay. उसी के उस पर ट्रेड होता है, ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, और पूरे ग्लोबल ट्रेड वगैरह चलती है। यही सैंक्शंस वगैरह वगैरह लगाते हैं कि कंपनी रुक जाए। अभी जो यूक्रेन वगैरह वो भी उसके बाद इन्होंने सैंक्शंस लगाए थे रशिया पे। और ये पेनल्टीज वगैरह में इम्पोज करते हैं, अगर दो कंट्रीज के बीच में कुछ है, एक कंट्री बैकआउट कर जाती है एग्रीमेंट से, तो ये पेनल्टीज भी इम्पोज कर देते हैं। ये बेसिकली एक गवर्निंग बॉडी है, काइंड ऑफ लाइक कोर्ट। बेसिकली ये ओवरसी करती है, हेल्प भी करती है बॉन्ड ट्रेड्स वगैरह करने में। बाकी ये एक ओवरसीयर पार्टी है। ठीक है, जनरल अथॉरिटी मतलब उनकी मीटिंग वगैरह, इंडिया भी पार्ट है उसका। ठीक है, कभी भी हो सकता है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट उनसे कॉन्फ्लिक्ट कर जाए, कि इनका, कि इन्होंने टैरिफ्स वगैरह बोल दिए कि ये चीज़, कैसे एग्जांपल हो, वैसे जैसे कई सारे मेडिसिन वगैरह हैं जो एक्सक्लूसिव टू इंडिया है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट आयुर्वेदिक मेडिसिन। ठीक है, वो लेकिन काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज में सच और बाहर बैन है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली इंडिया बिलीव करता है इन आयुर्वेदिक medicine, those things are are good, but according to European medicine वगैरह उनका लॉन्ग लास्टिंग थोड़ी सी मतलब दिक्कत है, मतलब दे आर काइंड ऑफ लाइक योर ड्रग्स, स्लो पॉइजनिंग ड्रग, नॉट लाइक लिटरल ड्रग्स, बट लॉन्ग टर्म उनका इट्स नॉट गुड फॉर। बट वही है, तो उन्होंने सैंक्शन लगा रखा है। बाकी डिस्कस में बाद में करेंगे इस टॉपिक को नहीं। ठीक है, लिख सकते हो ऐसे करके। बाकी सोवरेनिटी ग्लोबलाइजेशन की यही है कि नेशनल इंटरेस्ट और वो कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। ठीक है, डिफरेंसेस हो सकते हैं ऑब्वियसली, कि हमारे हमारे यहाँ की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और वहाँ की लार्ज स्केल कॉर्पोरेशन तो हो सकती है। बायोडाइवर्सिटी and monoculture. Okay, corporate patents often encourage the planting of few high yield varieties, leading to loss of thousand traditional plant species. ठीक है, सो इन बेसिकली अब एक क्रॉप है, इसमें एग्जांपल दूँ तो, अब उसी की डिमांड है एक मेडिसिन बनाने के लिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली कंपनी वही बनाएगी ना। अब कंपनी भी वही, जो जिस मेडिसिन की डिमांड है तो उसी के रॉ प्रोडक्ट्स को लिए वो ज्यादा बोलेगी, लोगों को ऑर्डर्स देगी। और फार्मर्स भी वही 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 वाली, क्या कहते हैं हिंदी में, बोएंगे। इन इंग्लिश फ्यूचर दे विल क्रॉप और आंसर, तो इन हिंदी भी से बोएंगे। ठीक है, हाँ, तो मेरी हिंदी बिल्कुल ही बेकार है, कोई नहीं। तो बेसिकली जो भी वो यील्ड करते हैं, या वो जो भी क्रॉप्स को अपने क्रॉप क्रॉप के जो भी करेंगे, ठीक है, वो भी वही करेंगे जिसको उन्हें प्रॉफिट मिलेगा एक्चुअली। अब ये थोड़ी है कि वो अपने वही चलाते रहेंगे कि नहीं यार डाइवर्सिटी होने चाहिए वो चाहिए। ऑब्वियसली हर बंदा अपने प्रॉफिट्स को ही सीख करेगा। ठीक है, दुनिया मतलब ही है, तो अपनी प्रॉफिट्स को ही सीख करो। तो यही है बस, तो उससे बस बायोडाइवर्सिटी लॉस और सोर्स होंगे ऑब्वियसली। अगर एक एक एरिया में पहले 100 टाइप्स थे, 100 टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्लांट स्पीशीज थी, अब वो कम हो जाएगी। अब ये फ्लोरा के चक्कर में फौना पे भी इफेक्ट पड़ेगा, एनिमल्स भी होंगे, तो धीरे धीरे फूड चेन पे इफेक्ट होगा, फिर फूड पे इफेक्ट होगा, हम इंसानों को भी आएगा लेकिन बहुत एंड में है। ठीक है, ऐसे ही होता है कि बाद में कई प्लांट स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करते या उनकी डिमांड कम हो जाती है, फिर उनकी प्राइस बढ़ जाती है। ठीक है, इसमें भी जीरो चला सकते हो। चलो कोई नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मैं ज़्यादा ही ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई नहीं। ओके, इन एग्जाम की टाइप है, राइट अबाउट द क्रिटिकल समरी फॉर द रीजन। ओके,
I have made it in a tabular form for it would be easier for you. You can write in the tabular form too in the exam. By writing like this, examiner will think कि तुम्हें literally आता है पेपर. ठीक है. एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है कि टेबल बना दो फिर उसी को रिटर्न करके लिख दो. तो एग्जामिनर को लिटरली लिखता है भाई बंदे ने पढ़ा हुआ है. तो लिटरली ना जब तुम ऐसे की पॉइंट बना के लिखते हो तो वो लिटरली अगर कोई तुम्हारी ग्रामेटिकल एरर हुई होगी ना या तुमने कुछ गलत भी लिखा होगा वो पढ़ के भी नजरअंदाज करके तो ग्रेडिंग अच्छी कर देगा. ए ग्रेड प्यार से मिल जाएगा. चलो डिस्कस करते हैं. टर्म ट्रेडिशनल नॉलेज. ठीक है. इन दिस it's mainly about the communal, shared, and evolved over since by local citizens. We are district of the TRIPS agreement, legal agreement setting standards for intellectual property. Okay. Biopiracy, the commercial exploitation of biological materials, traditional knowledge without compensation to the original humanity. Okay. Zero sum reality. The gain of patent holding corporation is a direct loss of the traditional farmers and better. Okay. Here is an example for you. While discussing this topic, focus on the tension between the private profit and the public good. Relate Debreu's economic argument to the social realities of Indian peasantry mentioned in that. ठीक है. तो बेसिकली वही है जो मैंने तुम्हें बताया कि फार्मर्स की अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी हैं कि पुअर वगैरह हैं, बीच में उनके पास मनी नहीं है वगैरह. उन्हें फोर्स करना पड़ रहा है. इंडिया में ड्रॉट्स वगैरह भी बहुत आते हैं. फार्मिंग्स में तुम्हें पता ही है कि दिक्कत होती रहती है. एक तभी वो सुसाइड कर लेते हैं. ऐसे बहुत चीज़ें हैं. फार्मर्स के लिए लिटरली बहुत टफ हो गया है. और इंडिया में सॉइल वगैरह भी पोल्यूशन वगैरह के चलते और जितना फैक्ट्रीज बन रहे हैं तो फार्मलैंड्स कम होते जा रहे हैं. लिटरली और लोग प्राइवेट हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन है. ठीक है. जो ग्रीन इकोनॉमिक जोन बनते जा रहे थे उसी में जो एक्चुअली फार्म लैंड है वो कम होता जा रहा है. जो गवर्नमेंट ने फार्म लैंड के लिए भी प्रॉपर्टीज दी थी कि एक जोन बनाए थे कि यहाँ पे सिर्फ फार्म लैंड होगा वो भी अब धीरे धीरे चेंज हुए जा रहे हैं. और वहाँ पे लिटरली उसकी जगह कॉलोनीज बन रही है. एग्जाम्पल तुम गुड़गांव का ले सकते हैं कि गुड़गांव में इतने सारे ग्रीन जोन्स थे जहाँ पे अलाउड आज भी नहीं है लीगली लेकिन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बनी हुई है. गॉड नोज व्हाई. कुछ कर नहीं सकते. और गवर्नमेंट अगर कुछ करती भी थी वो प्रोजेक्ट जो 5 साल हो रहा था वो रोक देते हैं. उनको 5 साल से सो रहे होते हैं. हाँ अब उन्होंने प्रोजेक्ट कोर्ट में केसेस चल रहे हैं और 15-20 साल चलेगा लेकिन वो पेड़ तो कट चुके हैं और कोई फायदा तो है नहीं. तो इसमें हम तुम एनवायरमेंट वाला भी ला सकते हो. ठीक है. क्योंकि प्राइवेट प्रॉफिट्स का लोग चेस करते हैं पब्लिक गुड मतलब वो सब मोरालिटी का लिखते हैं. ठीक है. एनीवे विद दिस टॉपिक एंड द पासवर्ड फॉर दिस shall be Sir Hardik 01. Okay, let me spell it for you guys. SIRHARDIK 01. Okay, all the best for your exam. Regards from Hardik Sutri. That is me, yourself. Sir, bye. थोड़ा सी रिस्पेक्ट दो. ठीक है. ओके एनीवे सर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि सी यू गाइस सून. बाय मेरे बच्चों. वेलकम बैक टू लर्न विद एंडलेस. मैम यार बहुत करेंगे इसकी रेटिंग भी. कोई नहीं नहीं ट्राई करी अगर अच्छी लगी तो अगले में भी उसको. ओके. सो as you guys know हमने यूनिट 3 शुरू की थी इस कोर्स की द इंडिविजुअल सोसाइटी एंड वी हैव डन विद द फर्स्ट 2 चैप्टर्स. उसकी वीडियो देख लेना है. और ये नोट्स फ्री हैं नए सब्सक्राइबर्स के लिए हैं. की पॉइंट्स हर वीडियो में बोलता हूँ. नोट्स सारे फ्री हैं. टेलीग्राम में है. ज्वाइन करो टेलीग्राम. ओके. टेलीग्राम में हर वीडियो के बाद नोट्स जैसी वीडियो पोस्ट होती है तो उसके नोट्स भी डलते हैं. नोट्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड है. ये हो चुका है 0 MB. ये 2 हो चुके हैं. ठीक है. आज हमें शुरू करना है इससे इंडियन से. ठीक है. तो पहले इनसे सुन लो. नोट्स फ्री हैं टेलीग्राम पे है. जो भी मेरे नोट्स अगर बेच रहा है या तुम्हें मिलते हैं जो पैसों के वो नहीं है. मेरे नोट्स मेरे टेलीग्राम पे फ्री हैं. बस पासवर्ड प्रोटेक्टेड जरूर है. उसके लिए तुम वीडियो देखो. वीडियो के बीच में पासवर्ड है. ठीक है. तो वीडियो देखनी पड़ेगी. और बाकी मुझे सपोर्ट के लिए और अगर तुम्हें लगता है तुम्हें नोट्स चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना बस. ठीक है. एनीवे without any wasting time let's get started with the topic. Okay. So here's the third unit. Third chapter. The Indian movie by Chitra Banerjee Divakuruni. Okay. The Let's get started with the introduction to the poet and its context. The poet Chitra Banerjee Divakuruni, damn yaar, काश बहुत है, is an acclaimed Indian American author and poet known for exploring the immigrant experience, particularly the lives of South Asians in the United States. The poem
The Indian movie is a poignant reflection of the cultural displacement and nostalgia felt by Indian diaspora setting. The poem is set in a dimly lit movie theater in America where Indian immigrants gather to watch a Bollywood film. Okay, so the next important question that could be asking is write about the themes of nostalgia and cultural identity, contrast between them. In this, you can write in these type of key points. The cinema as a sanctuary. For immigrants, the movie theater serves as a temporary refuge from the harsh, alienating reality of their lives in a foreign land. ओके जैसे बाहर जाते हो तो याद आती है फॉरेन स्टूडेंट्स से relate कर सकते हैं कि घर वाले की याद आती है कहीं भी बाहर जाते हो वैसे ही जो लोग फॉरेन जाते हैं उन्हें भी घर की याद आती है ओके नेक्स्ट would be the collective memory. Watching the film is a communal act that allows the diaspora to reconnect with their roots and shared culture heritage. वही बात है यार मूवीज देख के नॉस्टैल्जिया फील होता है मूवीज के कई सीन होते हैं या जिससे आप लिटरली अटैच कर पाते हो आपकी लाइफ में कुछ हुआ हुआ है या चाइल्डहुड में हुआ है आपको कोई मेमोरीज ट्रिगर्ड होती हैं लिटरली कभी कभी सॉन्ग से भी हो जाती है तो मूवीज इज आर काइंड ऑफ गुड मैं खुद मूवी बहुत देखता हूँ ठीक है तो पर्सनली मैं बॉलीवुड नहीं देखता मैं हॉलीवुड देखता हूँ वो भी हॉरर ठीक है तो वो चला गया हॉरर कॉमेडी देखता हूँ तो वही बात है मैं फिर अलग चला गया था बेटे बात ठीक है तो समझ आ गया ना बेसिकली मूवीज बेसिकली नॉस्टैल्जिया की फीलिंग देती है और कलेक्टिव मेमोरी है कि हर बंदे को कनेक्ट करके रखते हैं अब रूट्स कनेक्ट हो जाते हैं कि मूवी से लोग बेसिकली शेयर इंटरेस्ट है तो और मूवी में बेसिकली कोई रिचुअल्स हो गए या फेस्टिवल हो गए तो लोग फैमिली वगैरह और कलेक्टिव मेमोरीज याद आ जाती है तो कोप अप मैकेनिज्म है काइंड ऑफ ओके द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग would be the idealized idea the Indian depicted on screen is often idealized, full of vibrant colors, traditional values, the dramatic resolutions, contrasting sharply with immigrants' daily life. वही ना कि अपना घर घर होता है तो घर की याद आती है तो अच्छी चीजें ज्यादा आ जाती है तब बुरी चीजें याद नहीं आती है लेकिन अच्छी चीजें ये याद आती है कि यार मैं तो अपने घर में ये था बता फॉरेन में बेसिकली अकेले होते हैं हार्श रियलिटी होती है सब करना पड़ता है हाँ कि अपने घर में तो जैसे मर्जी रहो इंडिया में जैसे भी रहो वहाँ पे रूल्स ज़्यादा हैं डिसिप्लिन ज़्यादा हैं तो इंडिया में बेसिकली ले लो यहाँ ट्रैफिक रूल्स डब्बा गोल जीरो एंड फॉरेन में स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है वगैरह हुआ ठीक है इंडिया में फेक चीज़ें ज़्यादा है यहाँ की सिक्योरिटी भी कुछ नहीं है पुलिस फोर्स भी इतना नहीं करती ठीक है जब कॉल करो कि इमरजेंसी के लिए कुछ नहीं है एम्बुलेंस भी कुछ एक्ट नहीं करती ठीक है बाहर 911 से बेटर उनको और पुलिस वैसे स्ट्रिक्ट है उन्हें भी बकरे चाहिए होते हैं तो इमिग्रेट्स को उठाते हैं लेकिन तब भी 911 एग्जैक्टली हेल्पफुल तो है इंडिया में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कॉल करो तो क्या आपकी कोई भी इमरजेंसी हेल्पलाइन पे उनको फीडबैक भी नहीं आता पुलिस को फोन करो वो टाइम पे नहीं पहुंचती तो पहुंचती है तो इतने टाइम पूछती है कि सोचो अगर तुम कहीं रिपोर्ट करते हो और वो 1 घंटे लेट आती है अब 1 घंटे तक चोर बैठा थोड़ी रहेगा या तुमने किसी को पकड़ा है जो लड़ाई कर रहा है या चोर मिसबिहेव कर रहा है किसी से अब इसको कब तक रोक लोगे वो भी भाग जाएगा ना अगर पब्लिक भी उसको इंडिया में मारती जरूर है लेकिन वो भी भाग जाता है बाद में बेचारे लोग बचाने आ जाते हैं ना चलाने में फिर मैं बाहर चला गया ओके समझ आ गया ना पॉइंट्स लिख सकते हो तो अपनी लैंग्वेज में बहुत प्यारा लिख सकते हो मैं तो कभी कभी भर के आता हूँ पेपर में लिटरली तुम अगर डीयू में हर चीज को अपनी लाइफ से कनेक्ट करके लिख तो ये ना फॉर एग्जांपल करके पोएम से कंट्रास्ट करके हर एक में एग्जांपल करके लिख दोगे कुछ लिख दोगे द एग्जामिनर विल लव इट कि तुमने की पॉइंट्स लिखे हैं एग्जाम पॉइंट्स से लिखे हैं और अपनी लैंग्वेज में भी लिखे हैं पेपर जो चेक कर रहा था उसे भी मजा आता है लिटरली तो तुम्हारे ग्रेड्स लिटरली सच्ची तुम्हारी 9 जीपीए तो प्यार से आएगी एनीवे द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वुड बी द इमिग्रेंट एक्सपीरियंस एंड एलियनेशन सेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट the poem highlights the psychological gap between the immigrants' physical location America and their emotional home India. Again, जो discuss करते हैं alienation से. Okay. The next would be the economic and social reality. Deva Kurani subtly touches upon the mundane or the difficult lives the immigrants lead, while they seek to escape through the magic of cinema. वही escapism, coping mechanism जो मैंने discuss किया था. Okay, the double life. The poem portrays the duality of immigrant experience, living in one culture while emotionally other onto the other. वही कल्चरल डिफरेंस आ जाते हैं फॉन्ट्स वगैरह आ जाते हैं अब वहाँ कैथोलिक है सब मैंने मान लिया इंडिया में भी कैथोलिक चीज़ है लेकिन अब फर्क आ जाता है ना
इंडिया में कुछ भी हो, लोग नोजी ज्यादा होते हैं। तो रिलेटिव्स हों या आपके नेबर्स हों, दोनों नोजी होते हैं। बाहर अगर तुम बीमार भी पड़े, कुछ भी पड़े, तुम्हारे पास घर वाले भी नहीं है, ठीक है, अब मेडिकल कोई भी इमरजेंसी वगैरह, वहाँ डॉक्टर्स के लिए आपको बहुत लाइन करनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट्स बहुत लंबी होती है, कि हमारा वगैरह भी एक एक डेढ़ डेढ़ महीने लगते हैं। यहाँ पे जाओ, 1.5 घंटे में हो जाता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा 5 मिनट में हो जाता है, यहाँ पे भी लाइन होती है। 1.5 2 घंटे में यहाँ पे भी हमारा मिल जाता है। अगर प्राइवेट भी जाते हो, लाइन लेते हो, क्यों लेते हो, ऑब्वियसली भरा होता है। तब भी मेडिकल यहाँ पे तो बाहर बाहर से सस्ता है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट फैसिलिटी भी है, लेकिन यहाँ मेडिकल सस्ती है। और मेडिकल फैसिलिटीज हैं एक्चुअली बाहर, उनके पास पर्सन भी कम है। टेक्नोलॉजी है लेकिन पर्सन कम है, वही पर्सन नहीं है तो वो कैसे करेंगे। तभी बाहर डॉक्टर्स की नीड है, लोग जाते हैं। ठीक है, वही है। ओके, for the next important topic that we would be write about the literary techniques and imagery. Okay, that would be the sensory details. The poet uses vivid imagery to describe the sights and sounds within the theater, the smell of spices, the flickering screen, the collective sighs of the audience, the metaphor of the screen. The, the movie screen acts as a portal transporting the audience back to the version of home that may longer exist in real tone. The tone of the poem is bittersweet, blending the joy of cultural reconnection with the underlying sadness of permanent exile. Again, घर की याद आ रही है, bittersweet memory. Okay, for ये जस्ट अब डिस्कस कर दिया तो उसको नहीं जाते हैं, ऊपर ही मैंने सारा कर दिया। ठीक है, इतना समझो। Okay, for the last would be the critical analysis. Right about the critical analysis. Okay, so these are the main key points. Escapism versus reality. A key point for the analysis are how the cinema provides a temporary fix for the pain of migration, but does not solve the long-term issue of integration or loss. Again, with the escapism and nostalgia shit. Okay, we have discussed those. Okay, the role of popular culture. The poem argues that Bollywood films are more than just entertainment. They are a vital cultural glue that holds the diaspora of together. Okay, तो अगेन कि वही नॉस्टैल्जिया फिल्म आती है, मेमोरीज वगैरह फॉर्म होल्ड रखता है। वही मेमोरीज ट्रिगर होती हैं, सॉन्ग्स से हो जाती है, कुछ हो जाती है, कोई भी चाइल्डहुड चीज। पहले तो वो बुरी और क्रेजी लगती है, लेकिन बाहर जाके सब लगता है, जब अकेले होते हैं कि यार मेमोरीज बचती हैं, लोग तो होते नहीं सर। ठीक है, वही बात है। Okay, the identity construction. It explores how immigrants use media to reconstruct their identities in a space they often feel invisible or misunderstood. In this, you can write like जैसे कि आज के डेट में इंस्टाग्राम, बेसिकली लोगों की लाइफ स्टाइल मैच्ड अप कुछ हो, लेकिन लोग पोस्ट करना नहीं बोलते हैं। ठीक है, लोग दिखाते हैं हमारी लाइफ कितनी परफेक्ट है, अपने रिलेशनशिप को वैलिडेट के लिए बार बार पोस्ट करते रहते हैं कि देखो देखो हम रिलेशन। आई नो, आई लव इट यू गाइस पोस्ट, बट भाई बड़े बुजुर्ग ने सिखाया है, नजर नाम की चीज होती है। हर बंदा तुम्हारा कुछ नहीं चाहता, ये समझना चाहिए। एंड आई फील भाई नजर, मैंने ऐसे ऐसे लोगों के रिलेशनशिप टूटते देखे हैं जो कितने सालों से चल रहे थे। उन कंट्रास्ट वो भी देखे हैं जिनकी सगाई भी हो गई। लिटरली मेरे ऐसे स्कूल फ्रेंड्स हैं, दे जस्ट लाइक 21 22 लाइक मी, एंड उनकी सगाई हो गई। आई एम हैप्पी फॉर दोस गाइस। ओके, अगेन सानवी एंड वंश, कंग्रेचुलेशंस इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो। मुझे पता है तुम लोग नहीं देख रहे हो, लेकिन अगर कभी देखोगे इन फ्यूचर तो तब भी। ओके, अगर किसी को जानना हो जो ज़्यादा शौक करो मुझे, तो वो लोग KHMS के हैं। ठीक है, बाकी और क्लूज नहीं दूंगा। ठीक है, चलो ये टॉपिक हो गया। तो बस अल्टीमेटली यही है कि आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन की वैसे लाइफ में जब चल रही है, लेकिन मास कम करने के लिए और अपनी सेल्फ वैलिडेशन के लिए, लोगों के लिए, कि लाइक्स वाइक्स के लिए, कि देखो देखो मेरी लाइफ चल रही है। ठीक है, एनीवे, द पासवर्ड फॉर दिस वीडियो shall be Sir Hardik 02. Let me spell it for you. SIRHARDIK 02. All in caps. Okay. Okay. Here's the quick revision for this. Okay. Here's the aspects and the key concept. Central symbol. The movie theater, a space of sensory and memories, nostalgia shift. Okay. Okay. The primary emotion, nostalgia again, and the longing for home. Conflict. The harsh reality of life in America versus the fantasy on the screen. Okay. The Indian.
The memory, the nostalgia with a little bit of spice, Bollywood spice. Okay, the significance highlights how popular culture helps maintain immigrant identity. Okay, anyway, with this, ये chapter over है. All the best for your exam. Regards, Hardik Soti. That is me. So, okay, subscribe to my channel. शेयर करो वीडियो को फ्रेंड्स. अगर तुम्हारे कोई ग्रुप्स वगैरह हैं वगैरह, आई वुड सजेस्ट अगर उनका भी सेम कोर्स है तो कर दो, ठीक है शेयर. मेरी वीडियो शेयर कर दो, वो भी वीडियो देखेंगे, उनको अगर हेल्पफुल लगती है सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, ठीक है. मैं भी चाहता हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े, क्योंकि मेरे को भी कुछ मोटिवेशन ड्राइव बनेगा ना, कि भाई इस चैनल को बने हुए लिटरली 3 महीने हुए हैं एंड मेरे 200 सब्सक्राइबर्स भी. तो आई वांट कि लिटरली, लोग कहते हैं यूट्यूब में 1 साल लगता है, लेकिन भाई एटलीस्ट मोनेटाइज तो करा दो. मैं भी एक लॉन्ग टर्म गोल लेके चलूंगा कि सिल्वर बटन तो मिले मुझे, कभी तो ना कभी तो मिले, लेकिन तब भी अभी इतना तो कराओ, ठीक है. चलो, सी यू सून. बाय. क्या हाल चाल. हम लोग सेम एज ग्रुप के ही हैं, ठीक है. एनीवे, वेलकम बैक टू लॉन्ग लॉन्ग विद एडलस. मैं आई नो कि मैं बड़ा हूँ देखने में सिर्फ, और साइज में भी ऑब्वियसली तुम लोगों से, बट बच्चा लोग मैंने ऐसे ही बोला, ठीक है, फन वे में, जैसे लास्ट वीडियो में, ठीक है. सीरियस मत लेना, ये होना है हो जाना, क्या पता लोग ये बहुत साल वीडियो देख रहे हो. एनीवे, वी आर डूइंग द कोर्स द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, ठीक है. करेक्टली इसके यूनिट 3 कर रहे हैं, इसके फर्स्ट 3 हो चुके हैं. टॉयज बाय रूरल मार्चेस, वी हैव ओवर विद दिस, ठीक है. उसके बाद ये इसकी वीडियो है, देख लेना. और ये नोट्स वगैरह सब टेलीग्राम पर मिल जाएंगे नए सब्सक्राइबर्स के लिए, ये सीरीज हम गिर भी हो चुकी, ठीक है. और नोट्स मिल जाएंगे, और ये इंडियन मूवी भी, ये हमने लास्ट में डिस्कस किया, ठीक है. तो मैं बता दूं, नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम पे, नोट्स फ्री ऑफ कोर्स हैं. और मेरे भी नाम से कोई नोट्स बेच रहा है तो फेक है. और अगर तुम्हें मेरे नाम पे नोट मिलता है तो सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है. मुझे कुछ नहीं चाहिए पेमेंट वगैरह, मुझे बस अपने ये चाहिए कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे लगेगा लोग देखते हैं और वीडियो देखो, ठीक है. और नोट्स पासवर्ड प्रोटेक्ट है, ठीक है. और पासवर्ड प्रोटेक्ट है, और पासवर्ड हर वीडियो में है, ठीक है. वीडियो पूरे देखोगे तुम्हें पासवर्ड मिल जाएगा और नोट्स अनलॉक हो जाएंगे. काइंड ऑफ लाइक ए स्मॉल गेम, कि तुम्हारा रिवॉर्ड ये है कि तुम वीडियो देखोगे और तुम्हें पासवर्ड पासवर्ड मिलेगा और तुम्हें नोट्स मिलेंगे. और मेरा रिवॉर्ड ये है कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है. तो मैं भी फ्यूचर एस्पायर कर रहा हूँ कि मैं प्रोफेसर बनूँ, ठीक है. आई वुड लाइक टू परस्यू द पीएचडी, ठीक है. अभी तो पहले बैचलर्स आया, फाइनल ईयर है मेरा भी, ठीक है. एनीवे, let's get started with the new chapter, the fourth chapter. That would be at the Lahore Karai by Imtiaz Darfur. Okay, let's get started. Okay, here's the introduction to the poet and the context of the poem. The poet Imtiaz Darkar is a contemporary poet, artist, and filmmaker born in Pakistan, raised in Glasgow, who has lived in India and UK. Her work often deals with themes of identity, displacement, and the geography of people. The setting. The poem is set in a restaurant called Lahore Karhai in London, Wembley. It serves as a microcosm of the South Asian diaspora. Central theme. The poem explores how food acts as a bridge between the immigrants' past and the present, helping them reclaim their cultural identity in a foreign land. ओके, बेसिकली जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने, कि उसमें था कि मूवीज हेल्प करती हैं एज अ कोपिंग मैकेनिज्म और अ ब्रिज between memories, nostalgia, and type. And here in this one, it is the food at the restaurant that bridges people, that triggers their memories and nostalgia and the longing for their past childhood memories, or the memories of their hometown or home country. ठीक है. तो फॉरेन लैंड्स में होता है तो घर की याद बहुत आती है. जब दूर होते हैं घर से तभी घर की याद आती है. वही बात है, जब चीज़ें हमारे पास होती है ना, तब उन्हें उसकी कदर नहीं होती, जब हमसे दूर जाती है ना, तब उन्हें कदर होती है, ठीक है. यही बात है. Okay. The next important topic that could be asked in your exam would be, that could be asked, would be, could be. Remember words. Okay.
बहुत ज्यादा important. Okay, briefly explain the symbolism of the Lahore Karai. Okay, in this you can write like this: a space of reconnection. The restaurant is not just a place to eat; it is a space where people from different backgrounds, example whether they are Christians, Sikhs, Muslims, or Hindus, gather momentarily. It is the borders of the subcontinent. Okay, वहाँ कोई religion नहीं है. It's just a person eating and enjoying food. लोग नहीं सोचते. Okay, okay. The next would be the sensory memory. Darkar uses vivid sensory description, the smell of spices, kadhai, cook, the taste of hope to trigger deep-seated memories of the homeland that is physically far away. Again, I have discussed it's the nostalgia type thing memory that triggers कि घर की याद आती है पुरानी मेमोरीज ट्रिगर हो जाती है फूड से माँ के हाथ का खाना ठीक है या दादी के हाथ का खाना मेरे केस में माँ का हाथ का खाना है या नानी बुआ दादी है लेकिन कजन है कजन दादी होने में ज्यादा मुझे लगता है मेरी अपनी दादी यू नो सो एंड सो तो लाइक फन फैक्ट बताता हूँ नॉर्मली टिपिकली जो पुराने हाउस होल्ड होते हैं ना काइंड ऑफ उनमें जो बड़ा बेटा होता है फिर उनका जो बड़ा बेटा होता है ना जो घर का मतलब सबसे बड़ा होता है लड़का उसके साथ अब प्यार मिलता है हमारे घर में पुट्ठा हिसाब है और मैंने फिर अपनी लैंग्वेज चेंज करी काइंड ऑफ मेरी पंजाबी पहले आती थी मेरे को बोले भी 7-8 साल छोड़ दिए थे मतलब बेसिकली इतना पुट्ठा हिसाब है कि इन लोगों को यहाँ पे उल्टा है यहाँ पे बड़े लड़के को नहीं मिलता यहाँ मिला मेरे चाचा के लड़के को हर चीज में कंपैरिजन हाँ बस एक चीज में कभी कंपैरिजन नहीं होता कि हमारी एकेडमिकली तो उसको लिटरली इंटरेस्ट ही नहीं है उसको इंटरेस्ट ही नहीं है मुझे साइंस में इंटरेस्ट बहुत था मेरे भाई को इंटरेस्ट ही नहीं है उसके घर को बस उस बेचारे को इसलिए वो कंपेयर करते रहते वो करते रहते हैं वरना मेरे घर में मेरे को तो पूछे भी ना मेरे दादी वादी वो सब पूछती भी नहीं थी उनको बस ये था ये तो मेरा वो पुत्र है जो होशियार है पढ़ाकू है बस बाकी कोई रोल नहीं है मेरा बाकी ये रोल है उनका मेरी लाइफ में कि उन्होंने लिटरली मेरे एक बार हम बचपन में क्रिकेट खेल रहे थे तो उन्होंने लिटरली बस मेरे दांत को हम खेल रहे थे तो उन्होंने मेरे से बैट छीना उन्हें लगा हम लड़ रहे हैं लेकिन हम क्रिकेट खेल रहे थे तो उन्होंने जबरदस्ती छीना तो उन्होंने मेरे दांत तोड़ दिया उसके चक्कर में उस बेचारे रात में मुझे 3 बार ही रूट कैनाल हो चुके हैं ठीक है अब तक लाइफ में ठीक है और अगर अब डॉक्टर ने बोला उसमें दिक्कत आता है वो फ्रंट टीथ है और वो बनी टीथ है एक्चुअली तो इसलिए मैं उसे तब रिप्लेस नहीं करा सकता था बचपन में क्योंकि मेरा जॉब बिल्ड हो रहा था तो डॉक्टर ने ये कहा था कि बाद में दिक्कत आ सकती है शेपिंग वगैरह की तो उसने रूट कनाल ली हुई थी मेरी बचपन से तो देन आई वाज लाइक 7 ईयर से 6 का था तब हुई थी लड़ी ठीक तब मुझे लगी थी और मेरी दादी ने तब भी मेरी ही गलती बताई थी जिसमें हम क्रिकेट खेल रहे थे बच्चों ने सबने ये बोला कुछ नहीं था और भी थे मेरे कजन्स वगैरह तो मुझे समझ नहीं आया गलती की थी तब भी मेरे को डांट पीटी थी मेरे पापा ने मुझे डांटा था अगेन वन रीजन मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है बचपन से नहीं पसंद वैसे ही डॉगी वाला गेम लगता है बॉल की फेंको पीछे पर्सनल व्यू तभी छोड़ो मैं बाहर चला गया टॉपिक पे तो फिर से ओके सेंसरी मेमोरी का ये पढ़ के मेरे हो गया ये डिस्कस हो गया द डेली मिरेकल द एक्ट ऑफ शेयरिंग ट्रेडिशनल मील is described as a daily miracle that sustains the spirit of immigrant, providing a sense of belonging in often cold and indifferent land. Okay, the next important would be the diaspora and identity. In this, you have to write like the scattered people. The poem reflects on the scattered nature of the diaspora, people who have moved for better opportunities but carry the weight of their heritage with them. In this, basically, you can write like जैसे कि लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए whether that would be the financial jobs या फिर एजुकेशन के लिए बाहर परस्यू करते हैं लेकिन वो अपनी हेरिटेज और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं कि कई लोगों का होता है कि मैं बाहर से नॉलेज लेके अपने यहाँ पे अच्छा बिजनेस सेटअप करूँ कई लोगों को होता है मैं अपने बिजनेस को और इम्प्रूव करूँ कई लोग ये सोचते हैं कि मैं बाहर करके बाहर ही एक्स्ट्रा अच्छी इनकम कर लूँ कि मैं अपने घर वालों को यहाँ पैसे भेजूँ कई लोगों को घर से बाहर भागना होता है बहुत अपॉर्चुनिटीज हाँ पर्सनली मैं तो ना जाना चाहूँ अगर जाऊँ भी तो मैं अच्छा खासा वहीं बिजनेस सेटअप करूँ और फिर इंडिया में प्रॉपर्टी लूँ बड़ा ठीक है ओके द नेक्स्ट वुड बी द लैंग्वेज एंड कनेक्शन
The use of localized sounds and atmosphere of the restaurant creates a language of food that connects the diner to the ancestor. वही कहीं बाहर जाके अगर लंदन में वेम्बली में भी अगर मैं वहाँ कढ़ाई पनीर लिख दूँ या वो लिख दूँ, अब जो लोग इतने टाइम से बाहर रह रहे हैं या जैसे कि 10-15 साल से घर नहीं गए कि मौका नहीं मिला या बेसिकली कंडीशंस नहीं अलाउ करी, लेकिन वहाँ लेकिन नॉस्टैल्जिया फीलिंग आई कढ़ाई पनीर। बेसिकली अब इंडियन को ये पता है कि कढ़ाई पनीर क्या होता है या पराठे। पराठे तो नॉर्थ में फेमस ही है, तुम्हें पता है पराठे, आलू के पराठे। तो भाई वही यार नॉस्टैल्जिया क्रिएट हो जाती है, तो सही आ रहा है। मैं माँ को बोलूँगा पराठे बनाओ। थैंक यू यार। ओके, द नेक्स्ट वुड बी द रिक्लेमिंग द self. The alien environment of family, the diners reclaim themselves through the familiarity of दाल रोटी खस्सी गोश्त। ठीक है, इस स्टोरी में तो ये खस्सी गोश्त वगैरह था, दाल रोटी, ठीक है। लेकिन पर्सनल लेवल में मैं पंजाबी हूँ, मेरे घर में पराठे शराठे बहुत बचपन से होते हैं, ठीक है। और मैं आई लव पराठे, बहुत टाइप के अनगिनत खाए होंगे मैंने, ठीक है, वही बात है। लेकिन तुम्हें इस कंटेक्स्ट में लाना, वही अगेन मैंने बोला, मेन तुम की पॉइंट जरूर याद रखने हैं, स्टोरी याद रखनी है, लेकिन एग्जाम्पल में तुम अगर अपने जोड़ दोगे ना, तो लिटरली तुम्हारे आंसर्स बड़े हो जाते हैं और एग्जामिनर को मजा आता है। क्योंकि डीयू में लिटरली वो इसके तुम्हें नंबर अगर तुम इतना लिख दोगे ना नंबर देगा, लेकिन पूरा नहीं देगा। लेकिन जब तुम अपना सेल्फ एग्जाम्पल जोड़ के लिखते हो ना या अपने बारे में लिखते हो, टीचर फैसिनेट हो जाता है, ठीक है। टीचर को इंटरेस्टिंग लगता है, टीचर लगता है बच्चे ने अपना एफर्ट डाला। ओके, द नेक्स्ट वुड बी राइट अबाउट द लिटरेसी टेक्निक फॉर द एग्जाम। इमेजरी ऑब्वियसली टोन और स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं ना, ठीक है। इमेजरी, Darker uses physical imagery, the bright colors of the food, the greasy tables, to ground the poem in reality while exploring the abstract themes of nostalgia. Again, discuss कर लिया जरूरत नहीं लगा। Okay, the tone. The tone is observant, form, slightly bittersweet, acknowledging the loss of the home by celebrating the adornments of culture. Again, ये भी discuss कर चुके हैं, तो जरूरत नहीं है discuss के बाद। ठीक है, the structure. The poem structure mirrors the chaotic yet comforting familiar atmosphere of busy immigrant eatery. Okay, तो वही है मतलब इसमें मेरे को लग रहा है तो समझ आ रहा है, डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसमें कुछ लिखा नहीं है। Okay, okay, okay. The last important would be the write about the comparison with other diaspora work. ठीक है, जो अभी अभी हमने पहले करे थे, तो उनके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। उनसे कॉन्ट्रास्ट करके दैट वुड बी हेल्पफुल। ओके, और जो इन फ्यूचर भी हो, तो मैंने एक और उसको भी mention किया। Okay, जो हमने लास्ट डिस्कस की थी इंडियन मूवी बाय चित्रा बैनर्जी, इसके वर्सेस में this poem, this poem looks at how popular cultural and traditional food versus film provides century for immigrants. अगेन जो मैंने दोनों के पॉइंट्स बने तो कंट्रास्ट करके लिख सकते हो। सिमिलैरिटीज हैं काफी, डिससिमिलैरिटीज भी हैं लेकिन सिमिलैरिटीज भी हैं, ठीक है। ओके, वर्सेस ग्लोबलाइज, अगर वर्सेस ग्लोबलाइजेशन में लिखते हो तो सिमिलैरिटीज अगेन या अभी आगे हम डिस्कस करेंगे द लोगोज एंड ब्रांड्स। ओके, कि एट लाहौरी खराई कैन बी सीन एग्जांपल हाउ लोकल ब्रांड्स ट्रेडिशनल फूड रेजिस्ट द ह्यूमनाइजिंग फोर्स ऑफ ग्लोबल फास्ट फूड। इसमें तुम बेसिकली ये लिख सकते हो ब्रांड्स कि लोकल, अब एक बेसिकली मैंने बताया कि इनका तो कढ़ाई वगैरह ये कोरमा वगैरह का था बेसिकली, तो मतलब दाल रोटी वगैरह, तो और इसी में अब तो ब्रांड कर लो कब, तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आ जाते हैं। और फिर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स, आई लव मैकडोनल्ड्स, ठीक है। मैकडोनल्ड्स हो गया, तीन चार और भी नहीं नाम नहीं लूंगा, ये मेरा मन नहीं है ढूंढने के ऊपर, ठीक है। मैकडोनल्ड्स हो गया, ये बेसिकली हर बंदा जानता है, ठीक है। और इनसे compete करना पड़ता है उन्हें ग्लोबलाइजेशन में वगैरह, तो इसके कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आ सकता है। तुम यही बोल सकते हो कि ब्रांड वैल्यू ने इतना बना लिया है, तो लोकल्स को compete करना पड़ता है, उनकी अलग प्रॉब्लम्स आती है, फेस करनी पड़ती है कि आसपास की कल्चर कैसे एक्सेप्ट करेगा वो करेगा। अब जैसे ग्लोबल ब्रांड्स को भी करना पड़ता है, उनके भी मेरिट डिफरेंस है कि वैसे बाहर वो सारा हैम वाला मिलता है, उनकी सॉसेस वगैरह सब। और मैकडोनल्ड्स ने लिटरली इंडिया के लिए स्पेशल अपना वेजिटेरियन मेन्यू निकाला था तभी, ये आलू टिक्की या सच, ये एक्सक्लूसिव इंडिया थे पहले, ठीक है। इंडिया के लिए उन्होंने लिटरली मेन्यू चेंज कर दिया कि इंडिया मार्केट को घुसने के लिए, कंपटीशन को तोड़ने के लिए, तो इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। एनीवे, द पासवर्ड फॉर दिस वीडियो shall be Sir Hardik 03. Okay, let me spell it for you. SIRHARDIK 03. Okay, all in caps. Okay, here's a quick revision for this. Okay, aspects and key concept. Aspect location. Location is Wembley, the London, okay, UK, yeah. The Lahore Karai restaurant. Okay, main metaphor.
मेन मेटाफर वही है, फूड एज अ ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस टू पास एन ऑलमोस्ट नॉस्टैल्जिया में ट्रिगर कर देता है लिटिल द मिरेकल, द पावर ऑफ सिंपल मीट टू हील द ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आई एग्री, फूड इज द बेस्ट सोर्स, ठीक है। मैं मानता हूँ गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी ओवर ईटिंग लोग कर लेते हैं पर्सनली, मैं भी ओवर ईटिंग करता हूँ, मैं स्ट्रेस में होता हूँ, लेकिन वही है, धीरे धीरे कोपिंग मैकेनिज्म अलग होता है, मूवीज ये सब, पता नहीं, एक तो ये सारी चीजें इतने पर्सनल डीप शिट के लगे हैं, पहले वाला फुल, अब ये कोई नहीं, anyway, last would be the significance, highlights the persistence of cultural identity despite physical distance. Example, when writing your essay, focus on how the restaurant acts as a borderless space where the political divisions of India and Pakistan are displayed by the commonality of human hunger and heritage. Okay, with this, this chapter is over. Okay, all the best for your exams. Regards from Hardik Sotri, that is me, your sir. If you are न्यू तो होनी, अब देख लिया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को शेयर करो। मैंने बोला मैं बहुत रैंट करता हूँ, लेकिन अब धीरे मैं भी खुल रहा हूँ कि पहले मुझे कैमरा में शाय होता था जरा, अब धीरे मेरी एक्चुअल पर्सनैलिटी यही है, अगर मैं किसी के साथ कंफर्ट हो जाता हूँ ना तो मुझसे सब शेयर करता हूँ, ठीक है। मैं बहुत कम लोगों से शेयर होता हूँ, क्योंकि वो ये मुझे लोगों पर ट्रस्ट नहीं होता। अब मेरे को लिटरली लैपटॉप पर ट्रस्ट होने लगा है इन मिनट पे, तो मैं यूट्यूब को अपनी फैमिली समझ रहा हूँ, ठीक है। तो लाइक फैमिली फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स भी नहीं, मतलब फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स मतलब लिटरली फ्रेंड्स, नॉट दीस फ्रेंड्स, प्रॉपर फ्रेंड, तो मैं बात शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मेरा गोल वही है कि मुझे मोनेटाइज कराना है, ठीक है। मैं बाकी एस्पेक्ट्स तो पूरे हो रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, वॉच टाइम बढ़ रहा है, भाई सब्सक्राइबर्स लिटरली आई एम नॉट इवन वन फिफ्थ फ्रेंड, ठीक है, ऑलमोस्ट वन फिफ्थ ही डन हुआ है, और वही वॉच टाइम तो हो चुका है, वॉच टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है मेरा, ठीक है। तो हेल्प करो, शेयर करो, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ यार, कुछ करो। बाकी जिसको अगर और टॉपिक्स से अगर चाहिए मुझे कमेंट्स कर सकता है, आई विल हेल्प। कल परसों भी एक ने कमेंट किया है किसी भूमिका को मालूम में, आई विल हेल्प यार। मैंने पहले बोला था कि अगर वो 4-5 दिन पहले भी डाल देती ना तो कमेंट, आई वुड हैव हेल्प, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि एग्जाम से पहले डाल दूं। तो मुझे टेक सब्जेक्ट का डाला है जिसका एग्जाम भी 16 तारीख को है, मैं उसके नोट्स बनाऊंगा, मैं पढ़ूंगा वो, मैं उसके नोट्स बनाऊंगा, मेरा खुद का भी एग्जाम है, मेरे इंटरनल्स अभी बचे हैं, और ऊपर से मेरी दिक्कत ये है, मेरे 2 बैक के एग्जाम भी है, तो फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ बैक के एग्जाम पे क्या कैसे थे। अब बैक भी नहीं है, ई आ रहा है, आई वाज एब्सेंट, एंड स्पॉइलर अलर्ट, मेरा फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। एनीवे बाय, अब नेक्स्ट में मिलता है, सी यू सून। और मेरे बच्चों कैसे हो यार, मैं मामा शकुनी की तरह साउंड की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन निकल नहीं रहा, चल अगली वीडियो में फिर ट्राई करें। एनीवे वेलकम बैक टू लर्न विद एंगलिश अगेन, जोक्स अपार्ट, अब टॉपिक पे चलते हैं। एंड यू गाइस नो कि ये इंडिविजुअल सोसाइटी का कोर्स था, ठीक है। सो फार यूनिट 3 हम कर रहे थे, इसके पहले 4 हो चुके हैं, टॉयज हो चुका है, ठीक है। उसके बाद नीचे हमने वो भी कर चुके हैं, ये भी हो चुका है, ठीक है। टॉयज हो चुके हैं, जीरो कम गेम डन हो चुकी है, ठीक है। इसका आईपीआर वाला तो हो चुका है, इंडियन मूवी कॉन्टेस्ट हो चुका है, लास्ट हमने रेस्टोरेंट वाला करा दिया, ठीक है। लाइट लगाओ कराई, ये करा था, ठीक है। वीडियो देख लेना, बाकी अगर न्यू सब्सक्राइबर हो तो डू ज्वाइन टू सब्सक्राइब, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नोट्स सारे टेलीग्राम में फ्री हैं, ठीक है। उसके बाद नोट्स के पासवर्ड बस क्या है, नोट्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, और फॉर पासवर्ड आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, उसमें है, ठीक है। आई वांट कि थोड़ा इंटरेक्टिव है, तभी मैंने नोट्स में पासवर्ड लगाए हैं, ठीक है। और वो पासवर्ड भी मैं हटाने शुरू कर दूंगा, लिटरली जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे मैं धीरे धीरे पासवर्ड बनाना शुरू कर दूंगा। अब उनके इंटरेक्टिव रहें, बाकी अगर पासवर्ड तुम लोगों को रहने देने हैं तो कमेंट कर देना, मैं पासवर्ड भी रहने दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम ये कर रहे हैं, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ठीक है। तो तुम देख सकते हो, 2 ही बचे हैं शायद, ठीक है। एनीवे, विदाउट वेस्टिंग टाइम, गेट स्टार्टेड। Columbe by Edward Camoin Brathwaite. Okay, for this, okay, here's the introduction and historical context. The poet Edward Camoin Brathwaite, 1930 to 2022, was a Barbadian poet and scholar, a central figure in Caribbean literacy canon, known for exploring African identity and impact of colonization. The subject. The poem centers on Christopher Columbus, referred to by the French version of his name, Colombe, and his discovery of Americas. The historical revisionism. Brathwaite uses the poem to challenge the traditional Western narrative of Columbus as a heroic explorer.
Instead, he presents the arrival as a dark omen for indigenous population. Even Indians can agree on that. Indians, from Indians, I meant the Native American Indians, also the Indian Indians. Okay, उसके काफी व्यूज थे बाकी जिसने कोलंबस के बारे में पढ़ा हो उसको पता है क्रिस्टोफर कोलंबस क्या था मेरे हिसाब से वो he was a delusional person. Well, every great guy is a delusion for some people. ये सबके लिए होता है. अब बेसिकली अपना अपना एक बहुत फेमस बंदा है वो भी उसकी भी आइडियोलॉजीज थी रेसिज्म थी एंड सो वो भी ब्लड लाइन की प्योरिटी सोचता था लोग समझ आ गया मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो मुझे जान के उसका नाम नहीं ले सकता बैन हो जाएगा मेरे से ठीक है एनीवे वो भी अपनी रेस की सुप्रीमेसी से समझता था तो वही है कई लोग सब पागल होते हैं वो होता है एनीवे लेट्स गेट बैक टू इट ओके in the exam you could be asked about write about the themes of the conquest and violence the illusion of discovery the poem suggests that discovery is mainly a prelude to conquest Columbus' arrival is not an act of peaceful exploration but the beginning of semantic erasure of native culture again जो मैंने बोला कि भाई he was like a conqueror उससे अपने नाम देगा सब करेगा डिस्कवरीज करेगा जो लोग वहाँ पहले रहते पागल हैं वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उसके डिस्कवरी में वो कॉन्टिनेंट तो था ही नहीं उसने देखा तो boom, उस जमीन से अचानक से पानी से उग गया पानी से वैसे मतलब जमीन से पौधा उगता है ना वैसे अपने आप आ गया पत्थर उड़ गया ठीक है बेसिकली वही था वो आता है नाम देता है गवर्नमेंट आती है सीज करती है इंडियंस के साथ ये हुआ था अमेरिकन ब्रुटैलिटी वाला जो करंट अमेरिकन है दे आर नॉट अमेरिकन नेटिव अमेरिकन ना के बराबर हैं वो सारे वही हैं जो यूरोपियन कंट्रीज से या इंडियंस वगैरह बाहर गए हैं तो मतलब नेटिव तो वहाँ के हैं ही नहीं अब वहाँ के लोग नेटिव हो गए लॉजिकली लेकिन जो उनके एंसेस्ट्रीज के लोग जो आज से पहले तो वो तो थे ही नहीं एग्जिस्ट नहीं करते थे ठीक है Anyway, let's get back to it. The symbolism of ship. The arrival of European ships represents a technological and military illustration into the new world that has already inhabited and settled वही वो जहाँ के लोगों को स्लेव्स बनाते थे उनसे बाद में लेबर्स फोर्स कराते थे वो लोगों को बेसिकली पेट्स की तरह भी ट्रीट करते थे यू नो नोबल में यूज टू चल बोल नहीं सकता ज़्यादा फन फैक्ट ज़्यादा होते हैं एक्सेस नॉलेज भी बर्डन होती है ना मेरे को काफ़ी नॉलेज है ये डिस्कस करते हैं ठीक है ज़्यादा बोल दूँ ओके तुम्हें पता ही है बाकी अगर सर्च करना हो तो मैं इसकी भी वीडियोस बनाऊंगा द predatory nature the pathway portrays Columbus not as a curious traveler but as a figure with predatory gaze looking at the land in terms of its potential for exploitation and wealth again उसका कुछ वो क्यूरियस नहीं था उसे बस अपना फेम चाहिए था वेल्थ चाहिए थी जो एक डिस्कवरी से सब मिलती है यानी कि किसको नहीं चाहिए थी लेकिन वही उसका एम्बिशन कुछ कोई ग्रैंड नहीं था ऐसा बड़ा था उसका सेल्फिश था मुझे अपना नाम हर जगह डालना था उसने वो कर दिया okay next the next would be that would be our important topic that should be asked in the exam would be the right from the indigenous people's perspective what they think of the Brathwaite उसके ठीक है Brathwaite इसका लिखता है उनके perspective से कि the other voice the poem highlights the silence and eventual suffering of the indigenous people while his book celebrate the navigator Brathwaite focuses on the undiscovery the loss of sovereignty for the people already living there कि basically कहाँ वो वहाँ के ओनर्स थे बेसिकली उनका लैंड था और वहाँ अचानक से आके कॉन्करर आ जाता है बेसिकली वो स्लेव में रिड्यूस्ड हो जाते हैं बेसिकली वो लिटरली सिटीजन्स भी नहीं रहते हैं उनसे ह्यूमन राइट्स छीन लिए गए थे उस जमाने में तो बेसिकली दे वर रिड्यूस्ड टू नथिंग मोर देन पेट्स एंड यू यूरोपियंस काफी मेस्ड अप रहे हैं कई चीजों में वो पेट्स के साथ क्या करते हैं और वो बेसिकली उनके लिए कुछ हेल्प नहीं थी बेसिकली डॉग की तरह ट्रीट करते थे या शीप की तरह यूज करा थ्रो करा फेंक दिया उनसे अनरीजनेबल चीजें कराते थे कई लोग तो वो भी करते थे मतलब फिजिकल टॉर्चर करते थे और एनिमल्स की तरह बेसिकली जैसे हम एनिमल इंडिया में बेसिकली बकरी बकरी वगैरह की जिस पुराने में दिखाते हैं ना बलि चढ़ती थी काइंड ऑफ वो भी करते थे वो बैटल से पहले वो टॉर्चर वगैरह पसंद था काइंड ऑफ the next would be the vulnerability, the description of the landscape and the its people's emphasis is their innocence and the lack of preparation for the beach ships and the ironclad men they carry. And again, कि वो सर्कस वगैरह में ऐसे लोगों को डिस्प्ले करते थे लोग बेचते थे ठीक है वही
उस जमाने में बेचते थे, लिटरली स्लेव्स होते थे, तो वही था, ट्रांजेक्शन ऐसे करते थे और ऐसे लोगों को डिस्प्ले पे यूज करते थे, मतलब दैट वाज क्वाइट इनह्यूमन ऑफ देम. Okay. Okay, the next topic will be right about the literacy techniques and the image, right? Okay, the beak sheep. The Brathwaite uses the metaphor of the bird of prey, beaked, to describe the European ship. Suggested they have come to feed on the resources and lives of them. Again, उनका प्योर कॉन्केस्ट था, डिस्कवरी एंड कॉन्क्वेस्ट. बेसिकली अपनी माइट बढ़ानी थी, अपनी कंट्रीज को रिच करना था, कि यूरोपियन कंट्रीज सारी ऐसे करती है. अगेन, आप यूरोप अमेरिकन इंडियंस का एग्जांपल ले लो, या हम इंडियंस इंडियंस का ले लो. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, बाकी स्टोरी ये जस्ट हमारे साथ जो हुआ उनके साथ भी हुआ, इंडियंस कैन रिलेट, उन्हें हिस्ट्री पता है. ओके, the next would be the contrasting imagery. The poem contrasts the natural, fluid world of the islands, the green and the water, with rigid, metallic and destructive force of European arrival. Again, the natural, बहुत greenery वगैरह होती है, water peaceful था, और अचानक से destructive force, जैसे ships आ जाती हैं, fully loaded with cannons shit, और इंडिजिनियस पीपल के तो आपको पता ही है कि उनके पास बेसिकली वेपन्स के नाम पे स्पीयर्स वगैरह होते हैं, होता है, वो क्रूड होते हैं काफी. और उसी के कंट्रास्ट में जो मेटल शिप्स हैं, दे आर बेसिकली another tire. For gaming language, you can say they are upgraded versions of another tire because कहाँ cannons वगैरह और guns हैं और कहाँ वो, तो बेसिकली वो लोग स्केर्ड ही हो जाएंगे और ओवर पावर करेंगे. तो उसी के बारे में थोड़ी बात है कि नेचुरल मैन मेड फोर्स वगैरह. ठीक है. The irony. Okay, next will be the irony. The very name Colombe, meaning dove in French, isn't simply ironic, as dove is a symbol of peace. Yet Columbus brought centuries of war, slavery, and genocide. Again, जो मैंने डिस्कस करा था वही है कि Columbus basically, it's like you can compare him to like a, in case you can say उसे प्लेग की तरह करा गया है. For indigenous, from the indigenous people's perspective, he's like a plague. ठीक है, like a black death. ठीक है, लिटरली आती है, उसका सोल्यूशन नहीं है. लिटरली होता है ना कि सो जाओ गब्बर आ जाएगा, तो बेसिकली उसका नाम उसकी तरह यूज हो सकता है, इंडियन पेपर की सो जाओ वो लंबे आ जाएगा. और कॉन्ट्रास्ट यही है कि कहाँ पीसफुल और कहाँ वो. ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दैट्स राइट अबाउट द critical analysis of this one. Okay, in this you can write like the post-colonial critique. In an exam, link this one to the broader movement of post-colonial literature that seeks to write back to the empire by telling the story from the perspective of the colonized. Again, जो मैंने डिस्कस करे पॉइंट्स, स्लेवरी वगैरह, स्लेवरी टॉर्चर वगैरह, बाकी इंडियन ईस्ट कंपनी का आप कई पॉइंट्स में से ले सकते हो तुम लोग कि वही था. बाकी मैंने अभी बताया, जो ऊपर डिस्कस करा वही है सारा पॉइंट्स, उसके फर्दर डिस्कस. ओके, द लैंग्वेज एज अ टूल. Discuss how Brathwaite uses the colonial language to dismantle the colonial myths. Okay. By naming the opponent Colombe, he forces the reader to to look sorry to look at the figure through a different linguistic and cultural lens. Okay. Again उसने language as a tool use करा smartly कि उसने बताया कि फ्रेंच में कोलम्बे की मीनिंग इट्स dove. ठीक है, dove is a peaceful symbol. और उसने ये बताया कि कोलम्बे इज लाइक अ completely opposite of like a figure of destruction. ठीक है, slaughtering, genocide जैसे. तो बेसिकली वही है कि ये रीडर्स की फोकस ये डालना चाहता है कि हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं. ठीक है, फॉर यूरोपियन पीपल एंड फॉर द विनर्स जो सोसाइटी लिखती है. ठीक है, विनर्स ऑब्वियसली यूरोपियंस थे, तो उन्होंने अपने अच्छा अच्छा लिखा. लेकिन जो लूजर्स थे उनका पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ही वाज अ विलन, एंड ही वाज अ विलन फ्रॉम अ जनरल पर्सपेक्टिव. अगर तुम थर्ड व्यू से देखो, ही वाज अ विलन. ठीक है. एंड the last would be the relationship to unit goals. Connect this to the unit stream of individual and society. Specify how the actions of one's great man Columbus can lead to total upheaval and destruction of an entire society. Again, जो मेरे पॉइंट्स पर वो सारे लिंक हो सकते हैं कि जब वो इतना ज्यादा फेमस और नामचीन बंदा कोलंबस जैसा, कई लोगों का मॉडल भी, रोल मॉडल भी था बचपन में. आई नो, रिमेम्बर्स क्लासेस में मेरी बचपन में कि लोगों को उसकी तरह ग्रेट डिस्कवरर बनाना. वो तो हम बड़े होके पता चलता है ना कि बेसिकली वो डिस्कवरी को ग्रैंड मोटिव से नहीं था. जैसे कि लोगों का होता है ना कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कई लोगों का होता है मैं डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करूंगा फॉर जनरल पब्लिक. और उसके जर्नल कोई कुछ नहीं था. ही वॉज अ सेल्फिश पर्सन दैट जस्ट वांटेड फेम, मनी, एंड ही वॉज अ डिलीजेंट पर्सन. उसको बेसिकली उसकी गवर्नमेंट से वो मिला था कि जितना वो हेल्प करेगा उनकी, वो करेगा रिसोर्सेज वगैरह में,
और नए लोगों की डिस्कवरी करेगा, जितने स्लेव्स लाएगा उस हिसाब से उसे पेमेंट्स और कमीशन मिलते थे. एंड ही वाज अ connoisseur of, you can say that, for wine and such, and for few things तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, ठीक है. तो and then again we have this is over. So for the password for this video shall be Sir Hardik 04, ठीक है. Let me spell it for you as SIRHARDIK 04. Okay, all in caps. Okay. Last would be, here's a quick revision for this. Okay, aspects and key knowledge. The center figure for this is obviously Christopher Columbus, the Colombian. The main conflict, the myth of discovery, and the reality behind it, we have discussed. Okay, the key metaphor, ships as predatory birds, beat. Primary irony, the name Columbia dove thief versus the violence of his legacy. Major lesson. History is written by victors, and poetry can give voice to the victor. Yeah, जो मैंने victors वाला बोला वही है. And with this, this is over. All the best for your exam. Regards, Hardik Soti. That is me, yourself. अगर भाई सब्सक्राइब करो वो करो. और बाकी मैं लास्ट में बताता हूँ जो मैंने बोला था. जिस लड़की ने मुझे बोला था कि उसे जी मार्जिनाइज राइटिंग्स की चाहिए, भाई यार एग्जाम में ना 10 दिन बचे हैं. मेरे भी एग्जाम है. ठीक है, मेरे जो ईआर है ना वो मेरा फ्रैक्चर हो गया था, तो उसके लिए मैं दे नहीं पाया. ठीक है, मुझे वो पेपर निकालने पड़ेंगे. एंड दे आर लिटरली टफ. बेसिक्स ऑफ इकोनॉमेट्रिक्स, इट्स अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट लिटरली यार. मुझे समझ नहीं आ रहा दिया क्यों है. मेरे कोर्स एनालिटिक्स में उसकी जरूरत नहीं है. लिटरली दैट कोर्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड यार. एसएल के बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए. ना में क्लासेस मिली थी ढंग से ना कुछ. इट्स नॉट उसके लिए रेगुलर, उसके लिए लिटरली इट्स अ प्योर मैथमेटिकल सब्जेक्ट. ठीक है ना, मुझे उसकी मैथ्स भी हाई लेवल चाहिए. उसको फिर थ्योरी भी नहीं आता. ठीक है, तो आई विल ट्राई. बाकी आई विल ट्राई. मैं मना नहीं कर रहा स्ट्रेट अवे. अगर मेरे को मौका मिला तो आई विल मेक. ठीक है, और मैं शेयर कर दूंगा. ठीक है. कुमारी समथिंग जो भी था, भूमिका था, जो भी था. सॉरी, आई एम बैड विद नेम्स, बट आई विल हेल्प यू. जो मैंने कमिटमेंट लिया है तो मैं करूँगा. ठीक है. एनीवे, सी यू सून. बाय. यो गाइस, क्या हाल चाल. आज नहीं बोलूंगा कैसे हो मेरे बच्चे. ठीक है. एज यू गाइस नो कि ये इस ये इस कोर्स की लास्ट वीडियो होने वाली है. हम यूनिट 3 में हम बाकी सारे डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर्स. टॉस डिस्कस हो चुका. उसके बाद आपका जीरो सम गेम भी हमने डिस्कस कर लेते हैं. इन सब की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, मेरे चैनल पर मिल जाएंगी. ठीक है. इंडियन मूवी भी हो चुका. ठीक है. और उसका पता ही है तो मैं इंडियन मूवी का मूवीज वाला था कंट्रास्ट. ठीक है, इसमें फूड का नॉस्टैल्जिया था एट लॉ और कराई में. ठीक है. कोलंबिया में कोलम की कॉन्क्वेस्ट, इंडिजियस पीपल का उसका पर्सपेक्टिव कि उसको कॉन्करर वाला था, सेल्फिश पीपल. ठीक है. अब बचा है ये लास्ट. ठीक है, द ब्रांड एक्सपांड. ठीक है. अगर मेरे चैनल पे नए तो मैं बता दूं, ये सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. ठीक है, बट नोट्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगे. एंड फॉर दोज पासवर्ड्स यू हैव टू वॉच द कंप्लीट वीडियो. ठीक है, हर वीडियो में उनका पासवर्ड है. ठीक है, जो वीडियो तुम देख रहे होगे उसके अंदर एक पासवर्ड हिडन है. ठीक है, और वो तुम्हें मिल जाएगा. और अगर 1% में गलती से पासवर्ड मेंशन करना भूल गया, ठीक है, या तुम देख रहे हो और तुम कंबाइन वीडियो देख रहे हो, जैसे वन शॉट वगैरह कई लोगों ने बना दिया कि कॉलर्स आता है. ठीक है, तो अगर तुम्हें लगता है पासवर्ड मल्टीपल जाए या मिल नहीं रहा, तो टेलीग्राम पे जब नोट्स पे देखोगे ना, उनके आसपास ही मैंने उस पर टैग भी करा हुआ. अगर मैं कुछ नहीं टैग करा हुआ तो नोट्स वीडियो में, वैसे वीडियो में ही होते हैं नोट. और अगर तो वन शॉट बड़ी देख रहे हो ना, 1 घंटे की वीडियो देख रहे हो मेरी है वो देख रहे हो, भाई उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं. ठीक है, तुम्हें मिल जाएगा. ठीक है. एनीवे, फैमिली, फैमिली समझो तुम्हें. फैमिली बोलते हैं ना लोग. फैमिली हो काइंड ऑफ. सब्सक्राइबर हो जब रोज देख रहे हो, मैसेज डिस्कस कर रहा हूँ, रोज वीडियो डाल रहा हूँ, बात हो रही है. ठीक है, तुम मेरे वो फ्रेंड्स हो, तुम्हें साथ जुड़ा हो. ठीक है. विदाउट वेस्टिंग टाइम टॉपिक शुरू करते हैं. डिस्कस बीच में कर लेंगे या बाद में कर लेंगे वीडियो. जिसको इंटरेस्ट ना हो वो कर लेंगे. बाकी अगर किसी को मेरी बात ज़्यादा लगती है तो थोड़ा थोड़ा स्किप कर सकते हैं, देख सकते हैं. तो मैं पढ़ाई होगी. ठीक है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लास्ट चैप्टर. That would be The Brand Expands by Naomi Klein. Here is the introduction to the author and context. The author, Naomi Klein, born 1970,
is a Canadian author, social activist, and a filmmaker. She is a leading critic of corporate globalization. The work. This topic is an excerpt from her influential book, No Logo, 1999, which analyzes the rise of brand-oriented corporate culture. Central thesis. Klein argues that the modern corporates have shifted their focus from manufacturing products to creating brands. The brand is no longer just a logo on a product. It is a lifestyle and a set of ideas. Okay, you get it now कि the modern brand shifted focus कर चुका है मैन्युफैक्चरिंग में और क्रिएटिंग हर चीज की ब्रांड वैल्यू है. ठीक है. अब ब्रांड वैल्यू हर चीज में होती है कि जैसे एग्जांपल नाइकी का. तो वो बताइए कि नाइकी का जस्ट डू इट. तो ब्रांड्स की बेसिकली आपके लोगो नहीं है, सिर्फ लोगो से बस लोगो है भी लोगो की वैल्यू होती है. लेकिन नाइकी की उनकी खुद की भी हो गई है कि वो लोगों मोटिवेट करते हैं, उनके कोर स्ट्रेटजी है. ठीक है. कोर आइडियल जिसके आगे चलते हैं. ठीक है. तो इन्हें एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक कर सकते हैं दैट वुड बी लाइक द एवोल्यूशन ऑफ ब्रांडिंग एंड द discuss about the evolution of branding or the. ठीक है. what do you guys understand from the evolution of branding? ठीक है. ब्रांडिंग से रिलेटेड आए कि एक्सप्लेन करो कि पास्ट में क्या थी होती, तो इसमें ऐसे करके लिख सकते हैं कि the evolution of branding, historical shift in the past the companies focused on making things commodities, today they focus on brand identity. ठीक है. अब लोग क्वालिटी वगैरह पे इतना नहीं वर्क दे देते, चाहे ब्रांड की क्वालिटी रद्दड़ भी हो. मैं किसी ब्रांड को डिमेंड नहीं कर रहा, लेकिन भाई ब्रांड की इतनी हो गई है, वो सेम चीज तुम लेना चाहोगे ना विदाउट ऑफ ब्रांड, प्राइस में लिटरली 10K का फर्क होता है. 10 टाइम्स लिटरली 10K मतलब बोल रहा हूँ 10 टाइम्स का फर्क होता है. बस एक ब्रांड वैल्यू लगाने से ना, ब्रांड आइडेंटिटी देने से कि हमारा ब्रांड है वो सब, उसकी वैल्यू बहुत ओवरहाइप्ड हो जाती है. फिर बाद में लेकिन वो बहुत एक्सपेक्टेशन करता है कि हमारी शिपिंग कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन है, हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, हमारे एम्प्लॉयज है, ये सब. भाई वही चीज बाहर में मिलती है. बेवकूफ किसी और को बनाओ. अल्टीमेटली प्रॉफिट सीईओ के पास भी नहीं होता. सीईओ, मैं क्या बोलूँ, मेन ओनर्स के पास होता है, मेजोरिटी शेयर होल्डर्स. जब ब्रांड हर किसी को पैसा बनाना है, लोगों को लाइफस्टाइल चाहिए, ब्रांड तो वही है. जितना लूटोगे उतना ही कंज्यूम करोगे, कोई बात. ओके. ओके. The evolution, the brand as an experience. Successful brands like Nike, Disney, Starbucks do not just sell shoes, movies, and coffee. They sell inspiration, family magic, and third place to love. ना Nike, just do it. I just said डिज्नी फैमिली मैजिक की फैमिली बॉन्डिंग दिखाता है बहुत ज्यादा अपनी मूवीज में, पहले दिखाता था, अब तो डिज्नी बेसिकली आई कैन से दैट मोर अबाउट वोकअप कल्चर एंड एलजीबीटी. फैमिली मैजिक बहुत कम रह गया है. अच्छी खासी पुरानी क्लासिकल्स को ट्विस्ट करके हर चीज में वही बढ़ा रहे हैं. हर चीज वोकअप नहीं होनी चाहिए. क्लासिकल्स को क्लासिकल रहना तो यार, न्यू स्टोरीज बनाओ यार, इनोवेटिव लगाओ. तुम लोगों का जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग है ना, उसको फकड अप कर देते हो बेटा. फिर मैं पर्सनल जा रहा हूँ, कोई नहीं. ओके. एंड द थर्ड प्लेस, स्टारबक्स के बीच में ऑर्डर करके तुम अपना आप असाइनमेंट्स कर सकते, लोग करते हैं. ये मुझे तो पता नहीं पर्सनली. मैं स्टारबक्स अभी भी ओवर प्राइस समझता हूँ. और मैं कॉफी पी नहीं सकता एक्चुअली, डॉक्टर ने मना किया. फक. इसलिए आई यूज्ड टू लव कॉफी मच. ओके. The next would be the brand soul. Corporations now look for the soul of their brand, trying to associate their name with the deep human values and social movement. Again, corporations जानते हैं कि लोगों के अगर तुम इमोशंस पे इफेक्ट करोगे ना तो वो लेंगे. अब बेसिकली ना कि जो दिखता है वो बिकता है, हाथी का दिखाने के और खाने का. और अगेन जस्ट लाइक दैट कि ब्रांड्स लोगों के इमोशंस पे इफेक्ट करते हैं. कि देखो ये ऑथेंटिक ब्रांड है. एग्जांपल अभी बहुत ब्रांड्स आ रहे हैं, नाम नहीं लूंगा, कि इंडियन ब्रांड ये हमारा ऑथेंटिक ये है वो है, और नाम पे कि हम डायरेक्ट लेते हैं आर्टिसंस वगैरह, और वो उस आर्ट को दिखाते हैं हम इतना इतना ओवर प्राइस करके वो. अगर लेकिन तुम जनरल आर्टिस्ट के पास जाओ ना, और वो प्राइस लो देखिए, जूट वाले या जो ये बोलते हैं हैंडमेड वाली चीजें तो नेट पे मिलने लगी हैं. भाई तुम अमेजोन पे ही जाओगे ना, या जो ओरिजिनली आर्टिस्ट नहीं कर रही हुई, तुम उनसे वहां उनके लेने जाओगे उनके विलेजेस वगैरह में, या पैसे लोगे. भाई उसकी कॉस्ट इतनी कम होती है. और जब तुम किसी मिडल मैन से ब्रांड से लेते हो ना, जो अपना नाम लगा के जब दे देते हैं, भाई प्राइस में वही प्राइस बहुत फर्क होता है. एग्जाम्पल, मैंने ना एक काइंड ऑफ शॉर्ट्स और मतलब एक पूरा पेयर ही था काइंड ऑफ बहामास, और उसका मैंने शायद 1.5 साल पहले मंगवाया था एक विलेज से. इट कॉस्टेड अराउंड 280 और 290. ठीक है.
डायरेक्ट उनका कोई कैंपेन करके था एक एनजीओ के साथ और अमेजोन पे लिस्टेड था। और वही सेम प्रोडक्ट ना अगर तुम लिस्टेड अमेजोन पे और देखोगे, ये तो मैंने उनसे से लिया जो एनजीओ वाले थे और वो डायरेक्ट वहां से बनाते, सेम प्रोडक्ट विद ब्रांड। अगर तुम यहाँ दिल्ली में रहते हो तो कमला नगर या वैसे जाओ या बताओ, तो सेम प्रोडक्ट भाई साहब डबल प्राइस का मिल रहा था, 700, ऑलमोस्ट 700 या 649 ऐसे। भाई लूट मची हुई डबल, और कोई फर्क नहीं था, सेम स्टफ। जिसमें वहां की तो चीजों की ये तो इतनी गारंटी भी नहीं थी, यहाँ तो इन्होंने लिटरली फैब्रिक की मुझे गारंटी दी थी 6 मंथ्स की, जो विलेज वाले थे। तो वही बात है। ओके, टॉपिक पे चलते हैं। ओके, थर्ड वुड बी द एक्सपेंशन ऑफ ब्रांड। ये आ सकता है कि एग्जाम में कि राइट अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ द infiltration of public space. Klein highlights how brands have expanded into areas that were previously non-commercial, such as schools, museums, and community centers. वो ये पब्लिक स्पेस क्या हर चीज प्राइवेटाइज हो रही है। ठीक है, ब्रांडिंग हो गई है, स्कूल में भी प्राइवेट स्कूल्स वैसे, अब स्कूल्स में भी कुछ भी होता है, फ्रॉम डेस्क टू लाइक टू उसके बाद जो हमारी इन्वेंट्री होगी जैसे क्लासमेट, म्यूजियम्स वगैरह, हर चीज प्राइवेटाइज हो गई, कम्युनिटी सेंटर्स, हर चीज प्राइवेट हो गई है। Sponsorship and cooperation. Brand expand by sponsoring cultural events and opting cool urban culture to stay relevant to younger demographics. वही है, ब्रांड्स कैंपेन शुरू करते हैं, कल्चरल इवेंट्स में भी पैसा लगाते हैं, अपने अलग ऑप्शंस करते रहते हैं। अब जैसे जब प्राइड मंथ आता है, जो भी लोग भूल जाते हैं कि वो मेंटल पीस मंथ भी होता है, पता है गवर्नमेंट का। लेकिन अब प्राइड मंथ आता है तो हर ब्रांड शिफ्ट हो जाता है। मतलब ब्रांड का कुछ लेना देना हो ना ना, बस वो पीपल के सेंटिमेंट से जुड़ने के लिए, वो करने के लिए, पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, हम दुनिया के साथ चल रहे हैं, हम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, उनके लिए कूल सेंस के लिए वो करते हैं। Let's get back to the point. Next would be the lifestyle brand. Companies aim to provide a total lifestyle. For example, Martha Stewart doesn't just sell kitchenware. She manages a syndicated newspaper column, a magazine, and a TV programs to merchandise specific lifestyle. Okay, just example. Okay, ये example दिया हुआ था। It's a good one. Okay, the next would be the key examples and terms. ठीक है, अब फिर example को डिस्कस करें। For Tommy Hilfiger, ठीक है, समझ आ गया वैसे। Tommy Hilfiger mention a brand that builds its success not on the quality of the clothing, but on the branding of specific urban hip hop influence aesthetics. Tommy Hilfiger, उसकी जीन्स और क्लोथिंग, भाई उसकी जीन्स की क्वालिटी इतनी, आई नो, ज्यादातर लोकल्स हैं, लेकिन इंडिया में भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। ठीक है, इट्स नॉट अमेरिकन। ठीक है, उसकी फैक्ट्रीज वगैरह हर जगह सेल है। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि वहां से बेसिकली, लेकिन वो बेचते हैं, उनकी ब्रांडिंग है। ठीक है, होल फिगर 9,000 16,000 और भी बोल नाइकी एंड जस्ट डू इट। अगेन नाइकी with just do it, I know. Nike is cited as a prime example of company that transitions from being a sneaker manufacturer to a producer of sports concept. ठीक है, नाइकी सिर्फ स्नीकर बनाया था, उससे धीरे धीरे ब्रांड्स के लिए गया, वो एनबीए, वो सब पे गया, माइकल जॉर्डन सब। ठीक है, उसने धीरे धीरे सब करा। फिर उसने अपना करने के लिए उसने यूनिवर्सिटी इवेंट्स ट्राई करने की कोशिश करे, उसने ड्यूक तो गया। ठीक है, उसने धीरे धीरे उसने सारे कॉन्सेप्ट्स लेने लगा। उसने यूनिवर्सिटी लेवल वगैरह बास्केटबॉल उसने सबके लिए सबको स्पॉन्सर शुरू कर दी। उसने स्पोर्ट्स कॉन्सेप्ट्स ले आया अलग अलग। ठीक है, अब बेसिकली उसकी स्टेक हर जगह है। अब नाइकी के शूज में ना कि लोग परचेज के बाद रीसेल भी इतना करते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ती रहती है, शूज कलेक्टर इतना हो गया है, एक लिटरली न्यू प्रोफेशन बन गया नाइकी शूज कलेक्टर। नाम यार, कौन लाखों के जूते लेते हैं लोग, देखा इतने पागल है, मतलब अपने अपने शौक है। ठीक है, okay, next would be the synergy. This refers to the way different branches of corporation like Disney movies, theme parks, and toys work together to influence the same brand. Again, Disney से movies, animation work वगैरह था, पहले उसकी कॉमिक्स थी। ठीक है, कार्टून्स वगैरह था डिज्नी, कार्टून से मूवी शिफ्ट, मूवीज वगैरह, फिर उसने अपना एक लिटरली थीम पार्क लॉन्च कर लिया। थीम पार्क जो अभी शायद गुड़गांव में भी खुलेगा, इंडिया में अगर खुलता तो दैट वुड बी ग्रेट। जापान वाला भी बेटर। अब जापान वाले में स्पेशली ना जापानीज में लोगों को ज्यादा है इन चीजों में, तो उनके वहाँ कई स्पेसिफिक राइड्स और स्पेसिफिक थीम्स वगैरह हैं जो वही हैं। एंड सेम डिज्नी के टॉयज आते हैं वगैरह, एक्सक्लूसिव। वो एक्सक्लूसिविटी अपने ब्रांड रिइंफोर्समेंट के लिए बहुत करे हुए हैं एक्सपेंशन के। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक विल बी क्रिटिक ऑन ब्रांड एक्सपेंशन. In this, you can write like loss of choices. As brand expansions emerge, they create branded loops
where consumers only see products from a few giant, limiting genuine choices. एग्जाम्पल की उनकी मोनोपोली हो जाती है, ठीक है, अब किसी का ऑप्शन ही नहीं होता। एग्जाम्पल कि इंडिया में, इसी में थोड़ा सा हो जाते हैं कि हमारा टेलीकम्युनिकेशन में बेसिकली आज के डेट में दो ही बिग प्लेयर्स हैं, बची हुए हैं एयरटेल और जियो। वोडाफोन बीएसएनएल वगैरह मिक्स होने के बाद भी पिट चुके हैं। ना उनके यूजर्स हैं, लेकिन वो ऑफर्स लाते हैं अट्रैक्टिव कभी बीच में, लेकिन लोग क्यों चूज करें? लिटरली एयरटेल ने और जियो ने अपनी मोनोपोली बना रखी है। और उसमें भी अब धीरे धीरे कंज्यूमर बेस जियो का बढ़ता जा रहा है कि जियो ने अपने नेटवर्क्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिए फ्री वगैरह करके। जियो फैसिलिटी ज्यादा देता है। अब जियो ही लाया था कि अपना जियो सिनेमा वगैरह उसने हॉटस्टार कर लिया, फिल्म वगैरह ब्रांड मर्जेस वगैरह कर लिया, वो अपना बढ़ाया जा रहा है। अब उसने लेटेस्ट जो नेटफ्लिक्स ने जो सीरीज ड्रॉप करी थी या उनका रिन्यू हुआ था शो के लिए, जैसे फ्रेंड सीरीज थी वगैरह थी वगैरह, अब उसने उसकी मोनोपोली नहीं रही उस पे लिटरली जियो ने भी इनसे इतनी सारी इनकी ले ली है। अब नेटफ्लिक्स जो नेटफ्लिक्स ने प्रोड्यूस की थी या नेटफ्लिक्स एक्सक्लूसिव थी, वो नेटफ्लिक्स के पास है। जियो लिटरली कंटेंट लेके अपना मूवी बढ़ा रहा है, जियो अपना लिटरल को एक्सपांड कर रहा है। जियो का कुछ होगा नहीं, वो हर चीज में बढ़ रहा है अपना। ठीक है, समझ आ गया होगा। Next would be the economic inequality. Klein points out that the irony that while corporations spend billions on branding, they often save money by outsourcing actual product to sweatshops with poor working conditions. अगर मैंने डिस्कस कर लिया था कि बेसिकली हर कंपनी को चीप लेबर लेबर एक्सप्लॉइट करनी थी, वो इंडिया और चाइना में मिलते हैं। तो ठीक है, तो पहले चाइना में होती थी, अब इंडिया में होती है। अभी भी जो आईटी सेक्टर है, कुछ भी कहो, आईटी सेक्टर के लिए इंडिया है कि इंडिया में इंजीनियर्स इतने ज्यादा हैं और लिटरली टैलेंट बेस्ड हैं। उनको सेम इंजीनियर जो वहाँ वहाँ मिलता है और वो यहीं से आउटसोर्स कर लेते हैं, और यहाँ से उन्हें लिटरली उनके क्या बोलूं, वन थर्ड कॉस्ट में मिल जाता है। इतना फर्क है। अगेन रीजन मैंने इंजीनियरिंग इसलिए नहीं करी, बोरिंग थी। और कोई मुझे जज करे, भाई मेरे 90s में ही थे, ठीक है, 11 12 जीए भी क्लियर था, ठीक है, रैंक भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ठीक थी। मतलब कोई कॉलेज तो मिल जाता, 6,000 ही थी, 6,000 में थी, कोई कॉलेज तो मिल जाता, तो मैंने किया नहीं, बोरिंग थी मेरे लिए। और ये सुन के, ठीक है, मुझे फिजिक्स में इतना मुझे एक्सप्लेन करने की पसंद नहीं है, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ उसमें। मेरी टीचर चिढ़ती हुई थी मुझे, सॉरी बन देता हूँ अगर आपको बुरा लगा। तो असल होता है ना, आपने भी मेरे इंटरनल के नंबर काटे थे, मैं मेरी भी आती ज्यादा। Okay, anyway, let's take to the break. The cultural homogenization. The global expansion of dominant Western brands lead to a flat global culture where local identities are erased. Again, the cultural majority. Global expansion Western brand leads करता है, तो जो local businesses होते हैं वो threatened होते हैं, वो erased भी हो जाते हैं। तो basically वो मैंने वही बताया था, पहले भी डिस्कस होता है कि फॉरेनर जाते हैं, वो अपनी करने के लिए अट्रैक्टिव ऑफर्स आते हैं वगैरह लाते हैं, और जो लोकल ब्रांड्स होते हैं उनसे कम्पीट नहीं कर पाते कि ऑब्वियसली वो एक ह्यूज कॉर्पोरेशन से कैसे फाइट करेंगे, उनके रिसोर्सेज ऑलरेडी लोकल्स के लिमिटेड होते हैं। और ये एग्रेसिव एक्सपेंशन के चक्कर में या तो लोगों को सॉलो कर लेते हैं या लिटरली इनके बिजनेस उड़ा देते हैं। ठीक है, ओके, द लास्ट विल बी द नेक्स्ट इज द vocabulary from the context. Okay, boogeyman, person or real imaginary causing fear or difficulty. Blue chip stars, a term applied to anything of high value. Correlating, to put or keep something such as animal in an enclosure. Resonance, a period marking the revival of classical models of art and okay. These are some terms तुम यूज कर सकते हो, बट आई डोंट नो एग्जाम में आती हैं तो वगैरह, ठीक है। तुम अगर ये इंपॉर्टेंट, अगर ये क्वेश्चन आते तुम इससे रिलेटेड लिख सकते हो, ठीक है, तुम बना लोगे पॉइंट्स, ऊपर वाले पॉइंट्स से सारे हो रहे हैं, यू कैन। So the password for this video shall be Sir Hardik 05. Let me spell it for you guys. SIRHARDIK 05. All in caps. Okay. Okay. Here's a quick revision. Concept analysis. Shift in focus from manufacturing products to marketing brands. Okay. Brand identity. The brand becomes a soul or concept rather than object. Expansion button. Sponsoring culture, entering schools, and creating total lifestyle. Social impact. Limits public spaces, promotes consumerism, and exploits labor. Here's an example. When writing about Naomi, Klein emphasizes her critique of how corporations prioritize the image of the brand over the reality of the people who make or buy the product.
ठीक है, बेसिकली वो दिखता बिकता मैंने वही बोला। ठीक है, तो यही लिख सकते हो कि ब्रांड, उनके लिए ब्रांड वैल्यू बहुत है। ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने के लिए ब्रांड इमेज करनी पड़ती है। उनको मतलब ही नहीं है क्वालिटी से, या वो जितना एक्सप्लॉइट करें। ठीक है, बाकी मैं सीधा बोलूंगा, पेपर में इतना नेगेटिव कर सकता, मतलब हर चीज को घुमा के लिखना है, पर्सनलाइज होकर लिखना, लेकिन ब्रांड को थोड़ा सा मेंशन कर सकते हो, लेकिन नेगेटिविटी को भी थोड़ा सा घुमा के एक अच्छी मिलके बोलते हैं। हिंदी में वर्ड यूज करते हैं ना, सलीके से होना, मतलब इंग्लिश में यू कैन से स्मार्टली चूज योर वर्ड्स केयरफुली। तुम किसी को गंदा डायरेक्ट नहीं बोल सकते, मतलब मुझे भी सीखना पड़ रहा है, और उससे बड़े से गंदे को गंदा नहीं बोल सकते, बुरा लगता है। डायरेक्ट नहीं बोल सकते, मतलब चोर को चोर नहीं बोल सकते रियलिटी में। ठीक है, एनीवे ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, रिगार्ड्स हार्दिक श्रुति, दैट इज मी, यस सर। ठीक है, एंड विद दिस वी आर ओवर विद द यूनिट 3 एंड ओवर विद द कोर्स द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल माय वीडियो। अगर तुम ये लास्ट वीडियो भी देख रहे हो या तुमने सारी देखी है, तब लोग थैंक यू। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अगर तुमने जितना मैंने मैंने मेरी वीडियोस देख ली ना, तो पास तो ही जाएगा भाई। तो बहन नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है, मेरे लिए सब भाई लोग हैं। किसी को लगे मेरी लैंग्वेज ही ऐसी है। हमारे डीए में वही सिखाया जाता है कि ऑल आर माय ब्रदर्स। ठीक है शिट। मैं स्टार्टिंग में ऑल आर माय ब्रदर्स ही करता था। ठीक है, सब भाई लोग हैं आज के डेट में, कि मैं जेंडर वाइज में कहूँगा। ठीक है, सब मेरे भाई लोग हैं। मैं प्यार से सबको भाई लोग ही बोलता हूँ। ठीक है, तो सुनो भाई लोग, और सब्सक्राइब करना, शेयर करो। बाकी कौन से नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चाहिए, डू डीएम में, जिस लड़की ने मुझे भेजा है, आई विल ट्राई, मैं बनाता हूँ। ठीक है, वो सोच, बाकी जिसको जो और वीडियोस चाहिए या तुम्हारे नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, तुम ऑब्वियसली भी दे रहे होगे, जरूरी थोड़ी है सब मेरी तरह लास्ट सेमेस्टर वाले हो। जो जो तुम्हें सब्जेक्ट नेक्स्ट के चाहिए ना, तो मुझे भेज देना, सब्सक्राइब करो। बाकी मुझे कमेंट कर दो। ठीक है, मैं वो बना लूंगा कि तुम्हारे नेक्स्ट सेमेस्टर्स के लिए भी वीडियोस। और अब मैं वीडियो बनाऊंगा ही, अब वीडियो शुरू कर लिया तो मैं बनाऊंगा ही, मुझे जब टाइम मिलेगा मैं बनाऊंगा, और मैं बनाता रहूंगा। कंसिस्टेंट रखूंगा एक अचीवमेंट, एक अचीवमेंट रहेगी कि ये लाइफ में काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट करिए, अचीवमेंट करिए। बाकी अगर किसी को मेरा पढ़ाने के मेथड से दिक्कत है कुछ है, तो मुझे रिकमेंड कर सकते हो, आई एम ओपन टू सजेशन, मुझे भी आइडियाज मिलते रहेंगे। ठीक है, मुझे भी इम्प्रूवमेंट करना पसंद आएगा। ठीक है, अगर मैं कुछ चीज़ कर रहा हूँ उसमें इम्प्रूवमेंट हो तो बेटर हो, कि जैसे मेरा नाम है लर्न विद ट्रेंडर्स, मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि मैं इन्फॉर्मेशन लर्न करूँ और मैं लोगों को बताऊँ। ठीक है, बताऊँ भी नहीं कि तो हेल्प करूँ, क्योंकि दिस नेम इज, मैंने वैसे दो नाम से लिया ये नेम, क्योंकि मुझे लिटरली नॉलेज का भूखा हूँ मैं फ्री टाइम में भी रीडिंग करता रहता हूँ या फिर भी फैक्ट सर्च करता रहता हूँ। ठीक है, और मेरे को कुछ अच्छा नॉलेज का मिला नहीं, समझ आया, तो आई एम क्वाइट फैसिनेटेड विद इमोर्टल स्टफ एंड सच। तो मुझे एंडलेस से एंडलेस ये याद आया, अगर कोई नर्ड होगा मेरी तरह, एंडलेस मार्वल या डीसी में, यू नो लाइक द एंडलेस ड्रीम एंड सच वगैरह, एंड वी मतलब वही जो मोटल सिंस, जो काइंड ऑफ लाइक मोटल सिंस यार, मतलब जो, मतलब नर्ड स्टफ है, जो नर्ड्स को पता है उनको पता है, मार्वल और डीसी। तो बेसिकली जस्ट लाइक हिम, मेरा एंड नाउ, मैं एंडलेस हूँ। अगर मैं किसी तरीके से ना हूँ तो मेरी रूह ले लो या मेरी सोल कर लो, वो बार बार वही रहेगी। एज अ पर्सन मैं फॉर्म चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ये चलता रहे। कि आई वुड वेरी मच लाइक, अगर मैं कभी ये बंद कर रहा हूँ चीज़ें बचाना, तो मैं किसी को सस्ती, किसी बंदे उस बंदे को दूँ कि जो इस चैनल कंटिन्यू करेगा। मैंने माना डीयू में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैं कोशिश करूंगा सारे कवर कर लूँ, और धीरे धीरे अब मैं और भी करता रहूँ, सिर्फ डीयू नहीं बाकी भी। अगर कोई और टॉपिक्स तुम्हें लगता है, कोई टॉपिक लगता है बेसिकली इसमें तुम्हें चाहिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स चाहिए, या कुछ चाहिए, तो मुझे आइडियाज डीएम करो। मेरी इंस्टाग्राम पे मैंने दिया है, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। बाकी ये तो लव में रेडलेस वाली है, मेरी वैसे हार्दिक सोप्ते के नाम से भी है, तुम नेट पे लिखोगे हार्दिक सोप्ते के नाम से नहीं आता हूँ। अब मेरी फोटो भी इसमें है, तो ऐसी बात नहीं मिलेगी, तुम बुराले वाले रहे हो। ठीक है, अगर तुम्हें करना है तो तुम मुझे पर्सनली डीएम इंस्टाग्राम पे कर सकते हो करो। बाकी मेल तो है ओपन। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई, काफी लंबी हो गई, कि नो प्रॉब्लम, सी यू गाइस सून। लंबी हो गई, लेकिन जाना पड़ेगा। ठीक है, अब नए कोर्स के साथ आएंगे, और ठीक है, चलो बाकी ऑल द एग्जाम, तो लोगों की मेरी दुआ लगे, तो लोगों की दुआ भी मुझे लगे, इक्वल एक्सचेंज हो थोड़ा, तो सब्सक्राइब जरूर करना बस। ठीक है, कर दो यार। ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं।
Meow, 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 meow.